Yeah, good morning all. This is Professor Harshad Gore. I teach accounts at all three levels of CA. I have taught at Pan India level. My experience is more than 18 years in this industry. I have taught more than 50,000 students yet, and I have been invited by ICAI for rapid revision lectures for September 2024 attempt. I think so this is more than enough to introduce myself. Today we will start with Fastrack batch for May 2025 attempt. Today I will start with one of the simple chapter, and that is accounting for investments as per AS 13. So today we will talk about accounting standard 13. Correct? Chalo. We will have crisp theory, short theory based on this chapter, and then we will solve few problems related to this chapter. As far as examination is concerned, we can expect 6 to 8 marks question from this particular chapter. Correct? Okay, we will begin now. First question, sir, what is investment? So I can say investments are assets held by an enterprise. Investment क्या होता है? Assets held by an enterprise to earn dividend income, interest income, rental income, capital appreciation or any other benefit. I will jot it down here. Investment क्या होता है? So investments are assets held by an enterprise to earn dividend income, interest income, rental income, capital appreciation, or any other benefit. This is the definition of investment given by AS 13. So investment क्या होता है? तो investments are assets. Investment asset होता है जो एंटरप्राइज के पास होता है, हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज. एंटरप्राइज अपने पास क्यों रखता है? वो इन्वेस्टमेंट टू अर्न, उसमें से वो डिविडेंड कमा सके, उसमें से वो इंटरेस्ट कमा सके, उसमें से वो रेंट कमा सके, देन उसमें से वो कैपिटल एप्रिसिएशन ले सके एंड और कोई बेनिफिट मिल सके. दैट टाइप ऑफ एसेट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट. Now for your kind information, AS 13 does not cover dividend, interest, rental income. AS 13 covers the asset on which these incomes are earned. Now dividend income किस पे मिलता है बेटा? Investment
इन शेयर्स। इंटरेस्ट इनकम किस में मिलता है? Investment in debentures, bonds, government securities, etc. रेंटल इनकम किस में मिलता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट का वैल्यू बढ़ना उसे कैपिटल अप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ऐसा कौन सा एसेट होता है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और उसका वैल्यू बढ़ेगा, तो हम उसको कैपिटल अप्रिसिएशन बोलेंगे। सो आई कैन से दैट इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक्सेट्रा। ये सारे इन्वेस्टमेंट में कैपिटल अप्रिसिएशन मिल सकता है। एंड और क्या बेनिफिट मिलता है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो? वी कैन गेट बोनस शेयर्स, सो दिस इज द बेनिफिट पॉसिबल। वी कैन गेट राइट शेयर्स, दिस इज अनदर बेनिफिट पॉसिबल, करेक्ट? So this is the definition given by AS 13 related to investment account. Investment. This is our point number 1 of discussion. I hope everybody understood this investment. Investment समझा कि नहीं समझा? क्या होता है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है जिसपे हम ये सारे इनकम अर्न करते हैं। AS 13 में इनकम्स कवर नहीं होंगे। इनकम्स आर कवर्ड अंडर AS 9, बट AS 13 में क्या कवर होगा? सो ये इन्वेस्टमेंट्स कवर होंगे। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, करेक्ट? शेयर्स, आई कैन से डिबेंचर, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एटसेट्रा। ये सब AS 13 में कवर होगा। या चलो, shall I proceed guys? Okay. Now let us talk about this chapter. ध्यान से सुनना। ये चैप्टर को 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा। एक हम ये चैप्टर में क्या सीखेंगे? अकाउंटिंग। किसका अकाउंटिंग सीखेंगे? इन्वेस्टमेंट। सॉरी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। एंड अपने मेजॉरिटी क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है पता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। वी डोंट हैव अकाउंटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, we have accounting of investment in securities. This is our first part. And second, other questions related to AS 13.
AS 13 से दूसरे सारे क्वेश्चंस जो रिलेटेड है उस पर हम बात करेंगे। इसमें दो एरिया आते हैं, वन इज वैल्यूएशन एंड दूसरा रिक्लासिफिकेशन। So we will start with accounting of investment in securities. So let us start with So we will start with accounting for investment in securities. Now pay attention guys. As far as accounting is concerned, we will divide our investment in securities in two parts. Fixed income bearing securities and variable income bearing securities. In this chapter, we have to think from whose point of view? Investors' point of view. In this chapter, we will think from investors' point of view. Fixed income bearing security. Now, fixed income bearing security मतलब इसमें rate of income and date of income both are fixed. जो security में क्या fixed रहेगा? Rate of income and date of income, ये जिसमें फिक्स्ड रहेगा that is fixed income bearing securities. Example, investment in debentures, investment in debentures, bonds, government security, जिसमें rate of income and date of income are fixed. इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. देन वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज, जिसमें रेट ऑफ इनकम and date of income are not fixed. We will have question based on investment in equity shares. एग्जाम में या तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स डिबेंचर्स के क्वेश्चन आएंगे या फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर के क्वेश्चन. सो वी विल कवर बोथ द एरियाज इन करंट लेक्चर. यहां तक समझा बेटा? धवल,
Online students, if you will participate, would be better. Yes, very good. Thank you, thank you. We will start with fixed income bearing security. Fixed income bearing securities. अब इसका अकाउंटिंग कैसे करना है? सो बी विथ मी. There are, I can say, 3 transactions possible. Only 3 transactions possible in fixed income bearing securities. मतलब I can say investment in debenture, investment in bonds, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. उसमें 3 ट्रांजैक्शन पॉसिबल है. एक होता है परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीसरा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन दैट इन्वेस्टमेंट ऑन ड्यू डेट्स. So 3 transactions possible, and then we may have opening balance and closing balance of that investment. Do you agree with this? Yeah? चलो अभी इसका अकाउंटिंग सीखते हैं. बहुत सिंपल है. In this we will prepare investment account. Along with interest account. Along with interest account. अभी ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट अकाउंट, तो इसके कॉलम्स क्या रहेंगे? सो देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसा दिखेगा. We will have date, particulars, face value, interest, cost. Date, particulars, face value and cost. Now date में क्या लिखना है? You all are aware of. Date लिखेंगे. Particulars में we will write normal particulars. Face value column. Now face value column is just an information column. Face value column is just an information column. Interest column. Interest column is interest account. Cost column is your investment account. करेक्ट. सो आई कैन से एक्चुअली ये अकाउंट बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, बट इसमें इंटरेस्ट अकाउंट भी इंक्लूडेड है. सो आई कैन से इट इज डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, देन इंटरेस्ट एंड देन कॉस्ट. इंटरेस्ट कॉलम इज इंटरेस्ट अकाउंट, कॉस्ट कॉलम इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट. हैव यू अंडरस्टूड टिल दिस? यस, ओके. अभी क्या क्या ट्रांजैक्शंस पॉसिबल? फर्स्ट, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट परचेस करेंगे. ये एक बार ध्यान से देख लेना बेटा. First April is beginning of the year, 31st March is end of the year.
it is fixed income bearing securities, so there will be two interest due dates would be given, correct, because the rate of interest and date of interest both are fixed. I can say that in my illustration, date of interest is 30th June and 31st December. 30th June and 31st December. Correct? This is interest due dates. Now think about it. हमने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेस किया 1 सितंबर को. On 1 September we purchased bonds or we purchased debentures from other investor. हम उनको क्या पे करेंगे? What are we supposed to pay them? So answer is, whenever we will purchase any investment, we will pay them cost. क्या पे करेंगे हम लोग? कॉस्ट. करेक्ट. प्लस लाइक मैंने एक डिबेंचर 98 रुपीज में परचेस किया, तो ये 98 रुपीज मेरे लिए क्या रहेगा? कॉस्ट. प्लस नाउ दैट डिबेंचर होल्डर, दैट प्रीवियस ओनर ऑफ द डिबेंचर will ask for interest also. वो हमारे पास से इंटरेस्ट भी मांगेगा. सर हम क्यों इंटरेस्ट पे करेंगे? बिकॉज इंटरेस्ट किसको मिलता है? द पर्सन हु इज द डिबेंचर होल्डर, द पर्सन हु इज द होल्डर ऑफ सिक्योरिटी ऑन द ड्यू डेट, दैट पर्सन विल गेट इंटरेस्ट. सो मेरे को आंसर देना सोच समझ के. प्रीवियस ओनर के पास से अभी हम 1 सितंबर को डिबेंचर परचेस कर रहे हैं, उसको लास्ट में इंटरेस्ट कभी मिला रहेगा, तो उसको लास्ट में इंटरेस्ट ड्यू डेट 30th सितंबर को मिला रहेगा. डू यू अग्री विद दिस? करेक्ट. जुलाई 30th जून के बाद 30th जून को मिला रहेगा. आई एम सो सॉरी, 30th जून को मिला रहेगा. 30th जून के बाद जुलाई मंथ में, अगस्त मंथ में 2 महीना डिबेंचर्स उसके ही पास था. वो 2 महीने का इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आंसर इज मिलना चाहिए. तो अभी उसको कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगा? आंसर इज नो, क्योंकि नेक्स्ट इंटरेस्ट कंपनी 31 दिसंबर को पे करने वाला है. 31 दिसंबर को आई विल बी द ओनर ऑफ दैट डिबेंचर्स, आई विल बी द होल्डर ऑफ दैट डिबेंचर. तो मेरे को कंपनी 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेगा. करेक्ट. उसमें से 2 महीना, ये 2 मंथ्स, ये डिबेंचर हमारे पास नहीं थे, हमारे पास सिर्फ 4 मंथ्स के लिए थे. तो हम 2 मंथ्स का इंटरेस्ट अभी ऑन द डेट ऑफ परचेस हम पे करेंगे. किसको? प्रीवियस ओनर को. आई कैन से सेलर को. सो व्हेनेवर वी विल परचेस एनी इन्वेस्टमेंट in fixed income bearing security, that time we have to pay cost of the investment and interest. इंटरेस्ट कौन से पीरियड का पे करने का? कैसे सोचेंगे? ये सोचने का कि वो प्रीवियस ओनर को लास्ट में इंटरेस्ट कभी मिला था. In other words, we have to think what was the last due date of interest. So last due date of interest in my example was 30th June. So उसको 30th June को लास्ट में इंटरेस्ट मिला था. So जुलाई एंड अगस्त 2 महीने का इंटरेस्ट मैं उसको पे करेगा. Do you all agree with this? पक्का? अभी मेरे को बोलो एंट्री क्या बनेगा? We are purchasing investment. Entry will be investment account debit.
क्या वैल्यू आएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कौन सा वैल्यू जाएगा? कॉस्ट। और क्या पे करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट पे करेंगे। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू bank account, that is cost plus interest. You all know cost and interest दोनों हम ऐड कर देंगे तो जो प्राइस बनेगा ना वो प्राइस को बोलते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस, कंबाइंड इंटरेस्ट प्राइस. So this will be the entry for purchase of investment. बोलो परचेस का एंट्री क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? अगर मुझे इसको अकाउंट में जर्नल एंट्रीज नहीं पूछेंगे, दे विल आस्क यू टू गो फॉर अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट, लेजर अकाउंट. अब ये लेजर अकाउंट में अगर मेरे को फिलअप करना है, मैं कैसे करेगा जरा बताओ? परचेस का एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट. कौन से डेट को परचेस किया? 1 सितंबर. सो इन्वेस्टमेंट के डेबिट में क्या लिखेगा मैं? टू बैंक अकाउंट. फेस वैल्यू में मैं फेस वैल्यू लिखेगा डिबेंचर का, फिर फेस वैल्यू पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा. इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. कितने मंथ्स का इंटरेस्ट? तो लास्ट ड्यू डेट से डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक का इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. एंड देन इधर कॉस्ट लिखेगा. दिस इज द वे आई विल रिकॉर्ड व्हाट? परचेज. सच बोलो, यहां तक समझा क्या परचेज का एंट्री गाइस? चलो नंबर 2, we will have sale of investment. चलो सोच समझ के आंसर देना. whenever we are selling investment, so we will get what? Let us take example. 1 फरवरी को हमने सेल किया, तो 1 फरवरी को हम सेल करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा. क्या मिलेगा हमें? तो सेलिंग प्राइस मिलेगा. क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस मिलेगा. प्लस क्या मिलेगा? और इंटरेस्ट मिलेगा. इंटरेस्ट कौन से पीरियड का मिलेगा? सो फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब 31 दिसंबर से 1 फरवरी, मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा. करेक्ट? दिस 1 month इंटरेस्ट वी विल गेट. What would be the journal entry for sale of investment? Entry will be पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट. अभी बैंक में क्या प्राइस आएगा? सो कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस प्लस इंटरेस्ट. इन्वेस्टमेंट में क्या प्राइस लिखेंगे हम? सेलिंग प्राइस लिखेंगे. इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा. फिर जब भी इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे बेटा, वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो ये नोट लिख लो इधर. वी हैव टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑन sale of
investment and transfer it to P&L account. जभी जभी सेल आएगा तभी तभी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे, एंड जभी जभी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस P&L में ट्रांसफर करेंगे. डू यू अग्री विद दिस? दो ट्रांजैक्शंस क्लियर गाइस? 2 transactions done? Everybody quickly answer. Good. See, if you will respond, I will go for interactive lecture. Correct? Next. Interest received on due dates. बोलो, ड्यू डेट को इंटरेस्ट मिलेगा. किसके पास से मिलेगा ड्यू डेट को इंटरेस्ट? एक सेकेंड, ये सेल का एंट्री कैसे पोस्टिंग करेंगे हम लोग? जरा देखो तो इधर. सेल करना है मेरे को, तो ये सेल कौन से डेट को था? 1 फरवरी. तो सेल क्रेडिट में आएगा. बैंक अकाउंट डेबिट, परचेस है तो डेबिट में, सेल है तो क्रेडिट में, एंड अकॉर्डिंगली प्रॉफिट और लॉस विल बी एडजस्टेड. कोई बताएगा अगर प्रॉफिट आया तो एंट्री क्या है? व्हाट इज द एंट्री इफ देयर इज अ प्रॉफिट? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L. P&L क्रेडिट होगा अगर प्रॉफिट रहेगा, एंड अगर लॉस आया तो P&L डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट. एंट्री विल बी P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब कॉस्ट कॉलम. ये प्रॉफिट है, ये लॉस है. इधर बहुत जन को डाउट आता है कि सर लॉस क्रेडिट में क्यों लिखा, प्रॉफिट डेबिट में क्यों लिखा? बेटा लॉस हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है, बट P&L के तो डेबिट में ही जाएगा ना. सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. एंड प्रॉफिट का एंट्री क्या रहेगा? सो P&L के क्रेडिट में जाएगा. सो एंट्री इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. डू यू अग्री विद दिस? बोलो, इधर तक मैनेजेबल? ओके. नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड. एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तभी क्या सोचने का कि व्हाट वाज द लास्ट ड्यू डेट. लास्ट ड्यू डेट से डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक का इंटरेस्ट आएगा. This is the entry for interest. This is the way posting will be done. Do you agree with this? This is the way posting will be done. बस 3 ट्रांजैक्शंस दिखेंगे. Have you understood this much? पक्का? एक बार आंसर दे दो फटाफट स्कॉलर्स, चार्टर्ड्स. ओके, गुड. अभी बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस मैं 2 पॉइंट पे डिस्कशन करेगा. करेक्ट? एक है
transaction price. Transaction price. Now, what do you mean by transaction price? Transaction price means the price at which transaction take place. इन्वेस्टमेंट का ट्रांजैक्शन में क्या क्या रहेगा? परचेस एंड सेल. तो परचेस एंड सेल जो प्राइस पे होएगा दैट इज ट्रांजैक्शन प्राइस. करेक्ट. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस. ये ध्यान से सुनना, काम आएगा अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. एक बात याद रखना बेटा, ये जो मैं फास्ट ट्रैक बैच में कवर करेगा, majority concepts are covered. Believe me, you will find majority questions from our fast track material in your exam. क्योंकि जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ना वो सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, सारे एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो आई नो वेरी वेल इट इज फास्ट ट्रैक बैच, यू नो मेनी थिंग्स. जस्ट आपको मैं रिकैप करवा रहा हूँ. थोड़ा थियरी अच्छे से पढ़ो एंड देन अप्लाई दैट थियरी while solving the question. Easily you can cope up, because I want you all have to clear. जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब पास होना चाहिए ये बार in this attempt. I want that. और वो कैसे पॉसिबल है? तो बहुत सिंसियरिटी से आप लेक्चर अटेंड करो, जो भी नोट्स दे रहा हूं अच्छे से गो थ्रू करो. वो नोट्स थियरी रट्टा होना चाहिए एंड जो भी क्वेश्चंस मैंने शीट्स में दिए वो अच्छे से एक बार खुद भी सॉल्व करने का घर पे. सो यू कैन सॉल्व मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऑफ योर एग्जामिनेशन. टेक माय वर्ड्स. करेक्ट. या हमने फास्ट ट्रैक में सिर्फ एक ही चीज मैंने मिस किया है, और वो क्या मालूम है? रिपीटेशन. हर एरिया के हर कॉन्सेप्ट के एक एक सम रखें इंस्टेड ऑफ 2 और 3 क्वेश्चंस. इफ इट इज रेगुलर बैच तो हम वही टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस करवाते हैं. बट इन फास्ट ट्रैक बैच वी विल हैव 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. तो आप वो क्वेश्चन भी अच्छे से किया है ना तो उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे. टेक माय वर्ड्स. Attend my few lectures, you will come to know what I am talking about. Correct? हम नॉर्मली कैसे करेंगे सुन लो. Every day we will go for one chapter. करेक्ट. एक एक चैप्टर. अभी आपको क्या करना है? 1:30 के बाद लेक्चर कंप्लीट हुआ ना, सेम डे जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है उसमें से पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लेने का. पहले मेरा थियरी जो मैंने लिखवाया वो पढ़ लेने का. करेक्ट. उसके बाद में मैंने जो क्वेश्चंस करवाए वो एक बार आपको चाहिए तो वापस सॉल्व कर लेने का. एंड फिर आपके पास जो भी मटेरियल रहेगा वो मटेरियल से जो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं एक बार गो थ्रू कर लेने का. मेजॉरिटी क्वेश्चंस यू विल कम टू नो हाउ टू सॉल्व. समझाइए. बट सिंसियरिटी इज रिक्वायर्ड. इफ यू आर सिंसियर इनफ, बिलीव मी, यू विल क्रैक दिस एग्जाम इजीली. करेगा ना? नो आंसर. हाँ, यस, थैंक यू. आ गए. नेटवर्क इश्यू है. आई कैन अंडरस्टैंड. या गुड गुड गुड. इधर ही बैठने का. लेक्चर चुपचाप 6 घंटा लेक्चर बैठो और घर पे 3 से 4 घंटा पढ़ाई करने का. सो एवरी डे 10 to 12 hours if you will study, and believe me, it is practical paper. 30 मार्क्स के MCQ है विदाउट नेगेटिव मार्किंग. करेक्ट. एंड 70 मार्क्स और आई कैन से 114 to 118 मार्क्स का पेपर आता है. सो उसमें मेजॉरिटी पार्ट मैं जो करवा रहा हूं वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दो पार्ट में डिवाइड किया. वॉल्यूम 2 इज प्योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर. एंड वॉल्यूम 1 में वी विल कवर 9 चैप्टर्स. ये 9 चैप्टर्स का वेटेज कितना है पता है आपको? अराउंड 80 मार्क्स. आउट ऑफ 118 मार्क्स का पेपर 80 मार्क्स आपको ये वॉल्यूम 1 से दिखेगा. एंड बिलीव मी, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इफ यू विल अटेंड दिस नेक्स्ट 10-11 days. करेक्ट. एंड बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है? वी आर ऑन 14th April. तो अपना यहाँ से 10-11 दिन बैच चलेगा. फिर विद इन अ वीक यू आर गोइंग टू अपीयर योर एग्जाम.
सो अकाउंट्स बहुत फ्रेश रहेगा, यू कैन कोप अप इजीली, यू कैन क्रैक योर पेपर्स इजीली, करेक्ट। और एक सजेशन आपके अटेम्प्ट के लिए सुन लेना, इंस्टीट्यूट ने अभी अभी एमटीपी 8 एमटीपी साइट पे डाला है, एंड एमसीक्यूज के लिए केस स्टडीज का मटेरियल भी इंस्टीट्यूट ने साइट पे डाला है। कंपल्सरी वो एमटीपी 8 एमटीपी और आपके केस स्टडी एमसीक्यूज कंपल्सरी सॉल्व करके जाना, बिकॉज वो एमसीक्यूज जो डाले हैं ना केस स्टडीज वाले, वही एमसीक्यूज आपको एग्जाम में दिखेंगे। टेक माय वर्ड्स, सिमिलर टाइप ऑफ केस स्टडीज विल कम। अभी ये एमटीपी डाला है ना जो एमटीपी, उसमें हर एमटीपी में 3-3 केस स्टडीज है। 8 एमटीपी मतलब 24 केस स्टडीज तो उसमें ही दिखेंगे आपको, और वो 24 केस स्टडीज में से यू कैन हैव 3 केस स्टडीज इन द एग्जाम। समझ रहा है ये? सो एमटीपी विदाउट फेल सॉल्व करके जाना, इंस्टीट्यूट ने अभी अभी नया साइट पे डाला है, यू हैव टू सॉल्व दैट। पहले अपना स्टडी में मैं जो करवा रहा है वो अच्छे से कर लो। थियरी मेरा थियरी, सी मैं जो लेक्चर में थियरी करवाएगा ना, वो थियरी बहुत ईमानदारी से पढ़ने का, बी हॉनेस्ट इनफ फॉर रीडिंग दैट थियरी। पूरा थियरी रट्टा होना चाहिए। एक बार थियरी रट्टा हो गया, क्वेश्चन सॉल्विंग विल बिकम वेरी इजी। मैं थियरी बहुत टाइम नहीं लेने वाला हूँ, कंसाइज थियरी दूंगा, समराइज थियरी दूंगा, सो यू कैन रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग पीरियड, करेक्ट? या ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस गाइस, वन इज कम इंटरेस्ट प्राइस, अदर इज फिक्स्ड इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट मतलब कंबाइंड इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मतलब कंबाइंड इंटरेस्ट, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट या सेलिंग प्राइस रहेगा प्लस इंटरेस्ट रहेगा, दैट इज कम इंटरेस्ट प्राइस। कभी कभी क्वेश्चन में बोलेंगे वी हैव परचेज, और आई कैन से मिस्टर ए हैड परचेज्ड 100 डिबेंचर्स एट 98 कम इंटरेस्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कम इंटरेस्ट? कम इंटरेस्ट मतलब ये 98 में कॉस्ट भी है, 98 में इंटरेस्ट भी है, तो हमें दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, बिकॉज कॉस्ट विल गो इन कॉस्ट कॉलम एंड इंटरेस्ट विल गो इन इंटरेस्ट कॉलम। डू यू अग्री विद दिस? सो व्हेनेवर कम इंटरेस्ट प्राइस इज गिवन, वी हैव टू सेग्रीगेट बिटवीन कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विथ, or I can say cost or selling price and interest, we have to segregate that. X interest price मतलब excluding interest price, मतलब इसमें सिर्फ या तो कॉस्ट है या तो ये सिर्फ सेलिंग प्राइस है। यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कौन सा इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करते हैं हम? क्लोजिंग, ईयर एंड को उसका वैल्यूएशन कैसे करने का, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट क्या भाव पे दिखेगा, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे होगा, वो डिस्कशन है। As far as AS13 is concerned, there are 2 types of investments. One is करंट इन्वेस्टमेंट। करंट मतलब short term investment which are intended to be disposed of within a period of 12 months.
and second, long term investments which are other than current investment. This is the way AS13 has defined investments. तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर. अभी ईयर एंड को करंट इन्वेस्टमेंट किस पे वैल्यू करेंगे? सो आंसर इज करंट इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और fair value. You can consider fair value as market value, cost or fair value, whichever is lower. So current investment will be valued at cost or fair value, whichever is lower. And long-term investment will be valued at cost. इसको हम always cost पे value करेंगे. Unless the reduction is other than temporary. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नॉर्मली कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, बट अगर उसका प्राइस रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन हुआ है प्राइस में, एंड दैट रिडक्शन इज नॉट टेम्पररी, neither temporary nor permanent, that reduction is other than temporary, then in that scenario investment, long term investment can be valued at market price and loss can be recognized in P&L. I am repeating, if it is a long term investment, it is normally valued at cost, normally valued at cost, correct? But if market price is reduced of that investment, correct, and that reduction is other than temporary, temporary reduction nahi hai, other than temporary, then that reduction should be recognized in the books of accounts and investment will be valued at market price. Otherwise always investment will be valued at cost. ये हुआ long term investment. एग्जाम्पल दूं एक, सुनेगा? हाँ मैंने रिलायंस का इक्विटी शेयर परचेस किया 1200 रुपीज में. कितने में? 1200 रुपीज पर इक्विटी शेयर. अभी रिलायंस का इक्विटी शेयर 1200 में मैंने परचेस किया. ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया. अगर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो मार्केट गिर गया, करेक्ट? मार्केट गिर गया तो रिलायंस का जो 1200 रुपए का शेयर था वो 1100 रुपीज हो गया. नाउ टेल मी, दिस रिडक्शन इज टेम्पररी रिडक्शन के अदर देन टेम्पररी रिडक्शन? सो मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण जो रिडक्शन होता है, दैट रिडक्शन इज टेम्पररी रिडक्शन. And this investment is a long term investment. तो long term investment में temporary reduction को ignore करने का, we have to value our investment at cost only. मैं cost पे ही value करेगा. मैं मेरा रिलायंस का इक्विटी शेयर मेरे बैलेंस शीट में मेरे कॉस्ट पे ही बताएगा, 1200 पे ही बताएगा. ये क्लियर? या दूसरा एग्जाम्पल अच्छे से सुनना, मैंने ध्यान से सुनना, मैंने रिलायंस का इक्विटी शेयर 1200 रुपीज में परचेस किया. अभी देयर इज अ लॉस इन रिलायंस कंपनी, ह्यूज लॉसेस अकर्ड इन रिलायंस कंपनी. एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल. सो ह्यूज लॉस अकर्ड इन रिलायंस कंपनी
तो ये 1200 रुपए वाला शेयर 300 रुपए हो गया. Now tell me, this reduction is just a temporary reduction or other than temporary reduction? This reduction is other than temporary reduction. In this scenario, I will value my long-term investment at market price, and that market price is 300 rupees. And I will recognize 900 rupees loss in my P&L. Did you understand this? पूरा समझा? Yes. Good. Thank you so much. I hope you understood this. ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग हम सीखेंगे कि कैसे करना है. आई हैव वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. बाकी जो हम ये अकाउंटिंग करने वाले हैं ना, ये जो जर्नल वाला ये जो अकाउंटिंग करेंगे ना, ये ऑलवेज हमारे क्वेश्चंस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रहेंगे. करेक्ट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम वैल्यूएशन के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तभी हम बात करेंगे वापस लॉन्ग टर्म का. इधर तक समझा गया? एवरीबॉडी क्लियर? डन. चलो, नाउ आई विल स्टार्ट with question number 1. Are you all there, guys? Do you have this PDF with you all? PDF है ना सबके पास? नहीं है? Okay. Yeah, I will share with you in a while. I hope you can see my PDF. Okay. We will start with Mr. Purohit is giving you the following details relating to his holding in 8% debentures. 8% debentures of rupees 100 each of P Limited, which is held as a current assets. मतलब it is current investment, it is short term investment, करेक्ट. और 8% डिबेंचर बोला मतलब इट इज फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज. वी हैव फ्यू ट्रांजैक्शंस लाइक ओपनिंग, फिर परचेज, देखो परचेज किया है, फिर सेल, फिर परचेज, अगेन सेल. अग्रीड. ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन 30th September and 31st March. Mr. Purohit closes his books on 31st March 2012. Brokerage at 1% to be paid for each transaction, and show investment account as it would appear in his books. Market value of debenture is 99. देखो ये क्वेश्चन करेगा ना बेटा आपके फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. It will take minimum 45 minutes to conclude this question in lecture. Exam में you can wind up in 20 minutes. Correct? So मेरे साथ रहना, हम डिटेल में सॉल्व करेंगे. जिसको ये चैप्टर नहीं आता है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल फील कि ये चैप्टर आपको आ गया. और आज का आज, सी गिव मी 10 days, 10 दिन मुझे दे दो कि 10 दिन तुम मेरा लेक्चर बैठेगा और 10 का 10 दिन तुम यही चैप्टर रिवाइज करेगा कंपलसरी. सी बड़े बड़े जो चैप्टर्स है ना, लाइक अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, ब्रांच, ये बड़े बड़े चैप्टर एक दिन नहीं चलेंगे, ये 2-2 दिन चलने वाले हैं. करेक्ट. जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं दैट विल बी कंक्लूडेड इन 1 लेक्चर, दैट इज 6 hours.
करेक्ट? या आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो स्टार्ट करता हूं. वी विल प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 1 in the books of Mr. Purohit. In this chapter we have to think from whose point of view? Company point of view or investors point of view? Investors point of view. So Mr. Purohit कौन है बेटा? He is our investor. Investment in 8% debentures account. इंटरेस्ट के ड्यू डेट्स क्या है? 30th September and 31st March. हाफ पेज, हाफ से थोड़ा बड़ा बनाना. स्टार्ट करो स्कॉलर्स. You have to draw columns. We will start with first April opening balance nominal value मतलब face value cost 1,18,000. So 1st April 2011. एक मिनट, ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं. उसके बीच में इंटरेस्ट 30th September एंड 31st March. तो इंटरेस्ट किधर आएगा? 30th September मतलब इधर. Here we will have interest 30th September and 31st March. So 31st March is our year ending. 31st March. Do you agree with this? Correct? ये दो interest dates हैं. So mark करके रखने का. Now let us begin. 1st April 2011 opening balance. April 1 opening balance मतलब 2 balance brought down. $1,20,000 face value.
by 18,000 cost. Now, is there any accrued interest? Is there any accrued interest? Accrued interest मतलब क्या सोचने का, हम कौन से डेट पे हैं? 1 अप्रैल. लास्ट में इंटरेस्ट कभी मिला था? तो लास्ट में इंटरेस्ट 31 मार्च मतलब कल ही मिला था. तो इज देयर एनी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर? आंसर इज नो. सो देयर इज नो अक्रूड इंटरेस्ट इन दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. 1 अप्रैल डन. 1 जुलाई 100 डिबेंचर परचेज, एक्स इंटरेस्ट 98. सो जुलाई 1. एंट्री परचेस किया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा. सो इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड पे आएगा टू बैंक अकाउंट. ब्रैकेट में लिखो परचेज. अब बाजू में ही ब्रैकेट करना, जगह है तो उसमें लिखो परचेज. अभी एक एक कॉलम फिलअप करने का. 100 डिबेंचर्स मतलब 10,000. पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. 100 डिबेंचर, डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है. सो 100 इंटू 100 10,000. अभी उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो एक एक कॉलम फिलअप करने का. पहले फेस वैल्यू, फिर इंटरेस्ट, फिर कॉस्ट. सो 10,000 फेस वैल्यू, उस पर 8% इंटू कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा. मंथ्स के लिए क्या सोचने का. सी व्हेन वी आर परचेसिंग इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट परचेस करेंगे तो हमें कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. इंटरेस्ट कितने मंथ्स का पे करेंगे? सो फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. व्हाट वाज द लास्ट ड्यू डेट? 31 मार्च. और ट्रांजैक्शन कभी है? 1 जुलाई. सो 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 महीना इन्वेस्टमेंट प्रीवियस ओनर के पास था, तो मुझे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो 3 मंथ्स इंटरेस्ट वेलकम. चलो आंसर दो जल्दी, क्या आंसर आएगा? क्लियर यहां तक? क्या प्राइस पे परचेस किया? एक्स इंटरेस्ट 98. एक्स इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ कॉस्ट है. सो 100 डिबेंचर्स एट 98, 9,000. सच बोलो, परचेस समझा क्या? हैव यू ऑल अंडरस्टूड परचेस? Yeah, so our first transaction purchase is done. I will proceed with next. अभी बीच में मैंने लाइन ड्रॉ की है, देखो ये लाइन में क्या आएगा? 30th सितंबर. 30th सितंबर को क्या आएगा बेटा? तो 30th सितंबर को इंटरेस्ट आएगा. Who will pay this interest? तो company will pay that interest on due date. So 30th September is due date. में इंटरेस्ट मिलेगा. एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. सो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे सितंबर 30 बाय बैंक अकाउंट. ब्रैकेट में लिखो इंटरेस्ट. अभी ड्यू डेट को इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करने का? सो ड्यू डेट को इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा. आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू कितना है? 1,20,000 प्लस 10,000, टोटल 1,30,000 का आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू. मतलब 1,20,000 के डिबेंचर हमारे पास है,
प्लस 10,000 के हमने परचेज किए थे, सो टोटल 1,30,000 के फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स हमारे पास हैं, इनटू व्हाट 8%, इनटू व्हाट क्या सोचने का, मंथ्स के लिए क्या सोचने का कि लास्ट में इंटरेस्ट कभी हुआ था, व्हाट वाज द लास्ट ड्यू डेट, एंड लास्ट ड्यू डेट वाज 31st मार्च, हम 30th सितंबर के डेट पे हैं, सो 6 months इंटरेस्ट विल बी कंसिडर्ड। आर यू देयर? बोलो अमाउंट। क्लियर एवरीबॉडी? सितंबर 30th डन। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कभी आ रहा है? 1 अक्टूबर सोल्ड। नाउ पहले मेरे को बोलो, सेल किया तो एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो सेल का एंट्री क्रेडिट में है, अक्टूबर 1। बाय बैंक अकाउंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 200 डिबेंचर्स, so 200 into 100, $20,000। सेकेंड इंटरेस्ट कंसिडर होगा 20,000 इंटू 8%, 20,000 इंटू 8% इंटू कितना मंथ्स। तो इंटरेस्ट के लिए क्या सोचने का कि लास्ट में इंटरेस्ट कभी हुआ था? लास्ट में इंटरेस्ट 30th सितंबर को हुआ था, 30th सितंबर को इंटरेस्ट हुआ था, सो कल ही इंटरेस्ट हुआ था, सो इंटरेस्ट विल नॉट कम 0 months, तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट। अभी सेल क्या प्राइस पे हुआ है? सो सेल इज एट एक्स इंटरेस्ट 100। ओ इन दिस क्वेश्चन वी हैव ब्रोकरेज, एंड ब्रोकरेज 1% इज टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन, मतलब ब्रोकरेज परचेस में भी लेना पड़ेगा, ब्रोकरेज सेल में भी लेना पड़ेगा। तो अभी हम सेल कर रहे हैं, ये परचेस में भी फॉरगॉट टू कंसिडर ब्रोकरेज, तो ये परचेस में जरा ब्रोकरेज ऐड कर दो, तो इधर परचेस में ब्रोकरेज ऐड होता है, सेल में ब्रोकरेज लेस होता है, बिकॉज परचेस करते हैं तभी कॉस्ट पे करते हैं और ब्रोकरेज भी पे करते हैं, सो इट विल बी एडेड इन कॉस्ट। सेल के टाइम पे सेलिंग प्राइस हमें मिलता है और ब्रोकरेज हम पे करते हैं, इसीलिए ब्रोकरेज लेस होता है। सो हियर वी हैव टू कंसिडर ब्रोकरेज। इसमें 9,000 कॉस्ट में ब्रोकरेज ऐड करना है, 9,800 प्लस 1%, सो ये 9898 आएगा। इसका एक काम करता हूँ, मैं वर्किंग नोट नंबर 1 करके प्रिपेयर करता हूँ। आई विल गो फॉर वर्किंग नोट 1।
calculation of total cost of purchase as on 1st July. So X interest, purchase price was given 100 into 9,800 इस पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे 9818 वर्किंग अभी सेल रिकॉर्ड करना है सेल सो जब भी सेल आएगा वी हैव टू प्रिपेयर सेपरेट वर्किंग नोट कैलकुलेट करेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ net X interest selling price and profit or loss net X interest selling price and profit or loss on sale is on 1st October 2011. अभी वर्किंग स्टार्ट कहाँ से करने का तो वर्किंग स्टार्ट जो प्राइस क्वेश्चन में दिया है वहां से करने का सो क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइसेस की 200 debentures into 100 X interest selling price is given. अभी मेरे को बोलो सेल पे जो ब्रोकरेज पे करते हैं वो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे माइनस करेंगे सो माइनस ब्रोकरेज $19,800 this is our X interest selling price after brokerage. Everybody clear? अभी सेल रिकॉर्ड हो गया देखो अच्छे से देखना सेल इज रिकॉर्डेड but whenever sale will come we have to calculate profit or loss and it will be transferred to P&L आराम से मेरे साथ रहना ये 19,800 क्या है कोई बता सकता 19,800 is X interest selling price and selling price में profit और loss include रहता है सो ये प्रॉफिट और लॉस 19,800 में इंक्लूडेड है हमें क्या करना है उसको 19,800 से निकालना है एंड वी हैव टू ट्रांसफर टू P&L बिकॉज प्रॉफिट और लॉस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं रहना चाहिए इट शुड बी ट्रांसफर टू P&L अग्रीड
अभी ये प्रॉफिट और लॉस फाइंड कैसे करने का, that is the important area in this chapter. So x interest selling price, in short प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है तो हम सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे, सिंपल, करेक्ट. सो सेलिंग प्राइस मेरे पास है 19800 माइनस वेट, विल राइट एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट, एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट प्राइस. चलो अभी ध्यान से सुनना, कितना डिबेंचर्स हमने सेल किया, हाउ मेनी डिबेंचर्स वी हैव सोल्ड, 200 डिबेंचर्स. ये 200 डिबेंचर का सेलिंग प्राइस 19800 है, बट ये 200 डिबेंचर का कॉस्ट कितना, तो ये 200 डिबेंचर्स जो हमने सेल किया है उसका फेस वैल्यू 20,000 है, तो ये 200 डिबेंचर का कॉस्ट कितना, तो ये 200 कौन सा डिबेंचर, मतलब किसमें से बेचा, कहां से आया ये डिबेंचर. सो या तो ओपनिंग बैलेंस वाला बेचा रहेगा, या तो जो करंट ईयर में परचेस किया वो वाला बेचा रहेगा. कौन सा बेचा, ओपनिंग बैलेंस वाला कि करंट ईयर में जो परचेस किया वो वाला. अगर आप बोलते हो सर ओपनिंग बैलेंस वाला बेचा, ओपनिंग बैलेंस वाला पहले बेचा सर, उसको बोलते हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. आप अज्यूम कर रहे हो जो पहले आया वो पहले बेचा, दैट इज फीफो मेथड. बट entire AS13 is talking about weighted average method. If nothing is given in the question, we will always follow weighted average method. अगर क्वेश्चन में बोला है फीफो मेथड से सॉल्व करो तो ही फीफो करेंगे, we will not question the question, we will follow the question, करेक्ट. बट यहां पे कुछ नहीं बोला है ये क्वेश्चन में कौन से मेथड से सॉल्व करना है, वी विल ऑलवेज गो फॉर वेटेड एवरेज मेथड. डू यू ऑल अग्री विथ इट? बोलो इधर तक समझा? कौन सा मेथड, वेटेड एवरेज. बहुत जन को तो यही नहीं समझता है कि सर फीफो एंड वेटेड एवरेज अप्लाई किधर करना है. फीफो एंड वेटेड एवरेज विल बी अप्लाइड टू डिटरमाइन कॉस्ट नॉर्मली एट द टाइम ऑफ सेल. कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए वेटेड एवरेज एंड फीफो के कॉन्सेप्ट्स आते हैं. वी विल फॉलो वेटेड एवरेज. अभी कैसे फाइंड करने का, इसमें कॉस्ट बहुत सिंपल है, मेरे साथ रहना, जोड़े रेजो आराम से. ये नहीं अकाउंट दिखने का, अकाउंट बोलो. हमारे पास 1,20,000 का फेस वैल्यू था और 1,18,000 का कॉस्ट था. सो फेस वैल्यू कॉस्ट, अगर मैं फीफो अज्यूम करता ना तो मैं अज्यूम करता ये जो 200 यूनिट्स मैंने सेल किया ना, 200 यूनिट्स ये ओपनिंग में से सेल किया, तो ओपनिंग का कॉस्ट मेरा है 1,18,000, 1,20,000 का फेस वैल्यू है तो 118 कॉस्ट है, तो 20 का फेस वैल्यू तो कितना कॉस्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करता मेरे को आंसर आ जाता. बट वी आर नॉट अज्यूमिंग दैट दिस 20,000 दैट इज 200 डिबेंचर्स आर सोल्ड ओनली आउट ऑफ ओपनिंग बैलेंस. वी आर अज्यूमिंग वेटेड एवरेज मेथड. अंडर वेटेड एवरेज मेथड मेरे पास 1,30,000 का फेस वैल्यू है, उसमें से 20,000 के फेस वैल्यू वाला डिबेंचर बेचा है, करेक्ट. स्टार्ट करूं, कैसे करना है वेटेड एवरेज, ध्यान से सुनना. 120 का कॉस्ट है 118, 10,000 का कॉस्ट है, ये 120 फेस वैल्यू है ना जिसका, इसका कॉस्ट है 1,18,000, 10,000 है,
उसका कॉस्ट है 9898। सो टोटल मेरे पास 1,30,000 है, कॉस्ट है इसमें से 130 में से 20 का बेचा, इसका कॉस्ट कितना? $19,677 नहीं, राउंड ऑफ करने का, डबल राउंड ऑफ करो क्या? सो 19,677। अभी बोलो, सेलिंग प्राइस इज मोर कि सेलिंग प्राइस इज लेस? तो सेलिंग प्राइस इज मोर, देयर इज अ प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है? 123 का प्रॉफिट है। क्लियर एवरीबॉडी? सच बोलो, ये समझा? अभी प्रॉफिट का एंट्री करना पड़ेगा। एंट्री बोलो, प्रॉफिट का एंट्री क्या आएगा? प्रॉफिट किधर जाएगा? पीएनएल में। पीएनएल में किधर? तो क्रेडिट में। सो एंट्री क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल अक्टूबर 1। वर्किंग नोट 2। क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? चलो, क्या कंप्लीट किया हमने? हमने सेल कंप्लीट किया। नेक्स्ट परचेज। परचेज 50 डिबेंचर्स 98x इंटरेस्ट। सो परचेज कौन सा डेट को है? 1 जनवरी। डेबिट साइड पे आएगा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में परचेज 50 डिबेंचर्स 5,000। फेस वैल्यू तो 100 ही है। अभी दूसरा कॉलम फिलअप करेंगे, दैट इज इंटरेस्ट कॉलम। 5,000 इंटू 8% इंटू इंटरेस्ट के लिए नंबर ऑफ मंथ्स के लिए क्या सोचने का कि लास्ट में इंटरेस्ट कभी हुआ था? सो लास्ट में इंटरेस्ट हुआ था 30 सितंबर। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कंसिडर होगा। बोलो कितना आ रहा है? अभी परचेज प्राइस फाइंड करना पड़ेगा, ब्रोकरेज है। सो आई विल गो फॉर वर्किंग नोट नंबर 3। टोटल एक्स इंटरेस्ट
X interest purchase price 4,900. अभी इसमें ब्रोकरेज 1% परचेस में ऐड होता है. 49 rupees will be added. 4949 will be our total purchase price. एग्जाम में है ना बेटा, अगर टाइम नहीं है तो यू कैन अवॉइड परचेज का वर्किंग, उधर ही ब्रैकेट में कर दो, बट सेल के टाइम पे वर्किंग करना पड़ेगा. करेक्ट. टाइम कैसे मैनेज करना है? तो 1 मार्क इक्वल टू 2 मिनट्स. ये क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए आएगा. सो विद इन 14-15 मिनट्स यू हैव टू कंप्लीट. डन. आगे बढ़ते हैं. वी आर डन विथ परचेज. नेक्स्ट सेल. क्रेडिट में आएगा February 1 by bank account sales 200 debentures, so 20,000 face value. फिर सेकेंड कॉलम इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. 20,000 इंटू 8% इंटू हाउ मेनी मंथ्स. तो मंथ्स के लिए क्या सोचने का, लास्ट में इंटरेस्ट कभी हुआ था. लास्ट में इंटरेस्ट 30 सितंबर को हुआ था. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 4 मंथ्स. कितना आ रहा है बोलो. 533. नहीं, 0.3 है ना डबल, इसलिए 33 है. नेक्स्ट कैलकुलेशन. net x interest selling price. And profit or loss on sale is on 1st February 2012. कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोलो, सेल के टाइम पे ब्रोकरेज क्या करेंगे? माइनस होगा. $19,602.
जब भी सेल होगा तभी तभी प्रॉफिट लॉस फाइंड करना पड़ेगा. So how to calculate profit or loss? We will compare selling price with cost price. वेटेड एवरेज मेथड से कॉस्ट फाइंड करेंगे. कैसे करना है ध्यान से सुनना. 20,000 ये मतलब 200 डिबेंचर सेल किया. कौन सा वाला 200? इज इट फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस? इज इट फ्रॉम फर्स्ट परचेज? इज इट फ्रॉम सेकेंड परचेज? वी डोंट नो बिकॉज वी आर फॉलोइंग वेटेड एवरेज मेथड. वेटेड एवरेज में हमने जो भी हमारे पास टोटल डिबेंचर्स थे, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स थे, उसमें से हमने 200 डिबेंचर सेल किए. तो 1,20,000, 118. देखो कैसे करते हैं वेटेड एवरेज. उसके बाद में हमने और परचेस किया था 10,9898. इन शॉर्ट क्या लेना होता है मालूम है बेटा? बैलेंस ऑफ फेस वैल्यू कॉलम एंड बैलेंस ऑफ कॉस्ट कॉलम. फिर 123 भी था इधर. फिर और एक परचेस है. फिर एक सेल भी किया था हमने. $19,800. अभी चेक करो कितना है. So 135 minus 20. इसमें से 20,000 वाला सेल हुआ तो कितना? Selling price is less. So there is a loss. चेक करो तो सब लोग, एवरीबडी. देखो एक डाउट आया रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या डाउट आया रहेगा. धवल, मीनाद, नामिशा, अनाहिता, मेघ, क्या डाउट आया रहेगा मालूम है आपको? कि सर फेस वैल्यू एंड कॉस्ट आपने लिया वो समझा, वो 123 क्यों लिया आपने जो प्रॉफिट था? ये डाउट आया क्या किसी को? तो आई कैन डिस्कस. टेल मी गाइस. एनीबडी इज हैविंग दैट डाउट? यस. या गुड गुड गुड. पूछने का बेटा, इट इज अलाउड, यू कैन आस्क.
देखो मेरे को सोच समझ के बोलना, अपने को ये कॉलम में फेस वैल्यू चाहिए, ये कॉलम में कॉस्ट लिखना है, बरोबर। अभी ये 1,20,000 का कॉस्ट है 1,18,000, ये 10,000 का कॉस्ट है 9,898, 5,000 का कॉस्ट है 4,949, यहां तक ठीक है। ये 20,000 ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल ये वाला, बरोबर है। मैंने माइनस किया इसको, और उसका ये क्या है, ये 19,800 क्या है, कोई बता सकता है? अनाहिता, व्हाट इज 19,800? व्हाट इज दैट? कॉस्ट के सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, परफेक्ट, सेलिंग प्राइस। तो ये देखो मैंने कॉस्ट कॉलम में सेलिंग प्राइस लिख दिया, ये सेलिंग प्राइस लिख दिया। कैन आई से ये सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट रहेगा? यस तो वो प्रॉफिट कितना था? तो 123 का प्रॉफिट था। तो पहले मैंने सेलिंग प्राइस नेगेटिव 19,800 लिखा, उसमें से प्रॉफिट मुझे निकालना पड़ेगा ना, तो मैंने प्रॉफिट रिवर्स कर दिया 123, इसीलिए प्लस में लिखा। इन अदर वर्ड्स we have to consider debit face value column minus credit face value column and debit cost column minus credit cost column, करेक्ट? हाँ, और जो सेल कर रहे हैं वो फिगर्स नहीं लेने का, नहीं तो वो भी माइनस करेगा बहुत जन। जो सेल कर रहे हैं वो फिगर्स नहीं लेना, जो सेल का प्रॉफिट और लॉस है वो फिगर नहीं लेने का। इन शॉर्ट, don't consider this while calculating its profit and loss. बोलो इधर तक समझा सबको? एवरीबडी यू गॉट 80 रुपीज? एक बार हाँ बोल दो जल्दी। 80 मिला सबको लॉस? चलो गुड। ये जो भी डाउट्स रहेगा ना प्लीज विदाउट हेजिटेशन पूछते जावा। ओके अभी 80 को रिकॉर्ड करना है। एंट्री क्या है? पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो यहाँ पे आएगा बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, ब्रैकेट में वर्किंग फॉर, डेट February 1, लॉस इज 80 रुपीज। एवरीबडी क्लियर? चलो वी आर डन विथ फेब्रुवरी ट्रांजैक्शन। अभी 31 मार्च आएगा। 31 मार्च को वापस हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट किस पे आएगा? ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू पे आएगा। सो आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो फेस वैल्यू कॉलम डेबिट माइनस क्रेडिट करने का। 1,20,000 प्लस 10, 130 प्लस 5, 135 माइनस 20 माइनस 20, सो 40, करेक्ट? 135 माइनस 40 वी विल गेट 95,000। उस पे इंटरेस्ट आएगा 8%। कितने मंथ्स के लिए? So from last due date to the date of transaction, that is 6 months. करो multiply. चेक कर लो। Everybody clear? चेक करो जरा वापस। 95,000 into 8% divided by 3,800. I'm sorry, 3,800. Correct? Everybody clear? आगे बढ़ते हैं। That's it. We are done with the question. अभी year ending आएगा। year ending क्या है? 31 मार्च।
सो 31st मार्च का ईयर एंडिंग है. 31st मार्च को वी विल क्लोज दिस अकाउंट. आई होप वर्किंग वन सबने बनाया था. चलो क्लोज करते हैं 31st मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन. क्लोज करो. सबसे पहले फेस वैल्यू कॉलम का टोटल करने का, दोनों साइड पे 4 लाइन छोड़ के. Correct everybody? Now अभी ये 95,000 फर्स्ट कॉलम इज क्लोज. अभी चेक करने का इस पे कुछ इंटरेस्ट अक्रूड है क्या. तो अक्रूड के लिए क्या सोचने का, लास्ट में इंटरेस्ट कभी हुआ था, तो लास्ट में इंटरेस्ट 31st मार्च को ही हुआ है. सो देयर इज नो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन दिस. नाउ यू कैन क्लोज इंटरेस्ट कॉलम. क्लोज करो इंटरेस्ट कॉलम. क्रेडिट का टोटल करो इंटरेस्ट का. क्रेडिट का टोटल 3,800, 533 प्लस 5,200, 9,533 आ रहे हैं. माइनस 9,233. चेक करो बैलेंसिंग फिगर करेक्ट है क्या. मीना डबल एंड दिस इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट. इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ट्रांसफर. बी कॉस्ट कॉलम है. डेबिट का टोटल दो 1,18,9,898 123 4,949 132,970. -18 -19,602 19,800 93,488 आ रहा है. चेक करो. यस अभी मार्केट वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन. मार्केट वैल्यू दिया है. ईयर एंड का मार्केट वैल्यू जब भी दिया रहेगा we have to go for valuation. So working note number 5, valuation of closing investment is on 31st March 2012. कॉस्ट कहाँ से आएगा, तो कॉस्ट कॉलम का बैलेंसिंग फिगर
I hope you all know short-term investment will be valued at cost or fair value, whichever is lower. Cost कहाँ से आएगा? Balancing figure of cost column. Balancing figure of cost column. और फेयर वैल्यू दैट इज मार्केट वैल्यू. कितना दिया है मार्केट वैल्यू? 99 पर डिबेंचर. पर डिबेंचर चेक करो हमारे पास ईयर एंड को कितने डिबेंचर्स हैं. 95,000 फेस वैल्यू है डिवाइडेड बाय 100 करोड़, सो 950 डिबेंचर्स हैं. 950 डिबेंचर्स, तो 950 डिबेंचर्स इंटू 99, 94,050. चेक करो बराबर है. प्लीज आंसर. या अब ये दोनों में से लोअर क्या है? whichever is लोअर, और लोअर है कॉस्ट, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे वैल्यू होगा. करेक्ट. 93,488. Clear everybody? See, in this market value we have not considered brokerage because ICAI is not considering brokerage in determining market value for valuation of closing investment. Hence we have not considered. Alternatively, it can be considered and then accordingly valuation will alter. बिकॉज ये जो कॉस्ट है ना, ये कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर है, ये आफ्टर ब्रोकरेज है. मार्केट वैल्यू भी आफ्टर ब्रोकरेज ले सकते हैं. करेक्ट. मार्केट वैल्यू भी आफ्टर ब्रोकरेज ले सकते हैं, बट इंस्टीट्यूट इज नॉट कंसिडरिंग ब्रोकरेज इन मार्केट वैल्यू व्हाइल वैल्यूइंग क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट. ओके, एक डाउट आया है यहाँ पे. इफ इन द क्वेश्चन fair value was lower than where balance will be transferred. Very good question. अगर fair value कम रहता, मतलब market value अगर कम रहता, then difference will be transferred to P&L. difference किधर ट्रांसफर करते बेटा? P&L. तो कैसे होता? चलो एक पॉइंट बता देता हूँ. कॉस्ट है 93,488 और अगर मार्केट वैल्यू 93,000 आता तो मैं वैल्यू किस पे करता? 93,000 पे करता. तो ये 93,000 में इधर लिखता, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट 93,000, और फिर इधर मैं लिख देता बाय P&L 488. मतलब ये लॉस ऑन वैल्यूएशन हमने P&L में ट्रांसफर कर दिया. हैव यू अंडरस्टूड दिस? जिसने भी डाउट पूछा उसको समझा? डन. गुड. दैट्स इट. This is the end of question number 1. Exhaustive question. Did you understand this? Question is exhaustive. बहुत कुछ कवर हो गया. सच बोलो, समझा क्या? See, if it is our normal regular batch ना, तो हम पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फिर ब्रोकरेज वाले करते हैं, फिर थोड़ा 2 सेल वाले सम करते हैं. बट दिस इज अवर फास्ट ट्रैक बैच. यू नो मैनी थिंग्स. आपको बहुत कुछ आता है, मुझे सिर्फ आपके दिमाग से वो निकालना है. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. इफ यू विल
solve that question, your confidence will increase and you will feel कि नहीं सर ये हमको आ गया, हम एग्जाम में कर पाएंगे. Do you agree with this? Yeah. So I brought what you know. मैं बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ, मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लाया हूँ, एग्जॉस्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ. से वो करते हैं ना तो बाकी के क्वेश्चंस यू कैन मैनेज. क्लियर? क्वेश्चन 1 में कोई डाउट? पक्का? डन. गुड. चलो, shall I go for question number 2? Okay, read question 2. ये अगर मेथड नहीं दिया रहेगा तो कौन सा मेथड फॉलो करने का? वेटेड एवरेज. हाँ, एक इधर डाउट आया था. Debentures are short-term investment. Agreed. In this question, debentures were short-term investment. Short-term investment को हम किस पे वैल्यू करते हैं? So cost और fair value whichever is lower. चेक करो, ये थियरी मैंने लिखवाया था, उसमें short-term investment मतलब current investment. It is valued at cost or fair value whichever is lower. अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा देन इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट अनलेस द रिडक्शन इज अदर देन टेम्पररी. समझा ये? यस. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट अस गो फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 2. देखो, एक क्वेश्चन हमने वेटेड एवरेज का किया ना बेटा, तो सिमिलर क्वेश्चन हम फीफो के लिए करेंगे. सो कैसा रहेगा? अपना बुक सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे एरियाज कवर हो जाएंगे. अग्रीड? Yeah, shall I proceed? Question number 2. Mr. Harsh provides you the following details relating to his holding in 10% debentures, face value 100 each of X Limited, held as a current asset. मतलब short term investment है. Agreed? Yeah. Okay. 1st April opening balance, 1st June purchase, 1st November purchase, 31st Jan sold, 31st March market price is given. So again valuation करना पड़ेगा. Due dates are given 30th June and 31st December. So 30th June इधर आएगा, ये 30th June, 31st December इधर आएगा. So 31st December. दो ड्यू डेट्स हैं. ब्रोकरेज भूलने का नहीं. ब्रोकरेज 1% is to be paid for each transaction. I hope you got this. Mr. Harsh closes his books of accounts on 31st March 2019. Show investment account as it would appear in the books of Mr. Harsh, assuming FIFO method. So ये सब FIFO method से करना है. Did you understand this? चलो, सेम फॉर्मेट ड्रॉ करो जल्दी जल्दी. क्वेश्चन नंबर 2. बुक्स ऑफ मिस्टर हर्ष. बुक्स ऑफ मिस्टर हर्ष. Investment in 10% debentures. Interest due dates are 30th June, and 31st December. Again, 3/4 page account.
चलो स्टार्ट करें। रेडी एवरीबॉडी? ओके। 1st April opening balance 12,500 debentures cost 12,25,000. (2018-19) 18. April 1, to balance brought down 12,500 debentures, face value is 100, so 12,50,000. And cost 12,25,000. आपको कॉलम्स ड्रॉ करना है बेटा, फेस वैल्यू कॉलम ड्रॉ करने का, इंटरेस्ट कॉलम ड्रॉ करने का, कॉस्ट ड्रॉ करने का। ओके, यहां तक समझा? अभी ध्यान से सुनना। ये ओपनिंग बैलेंस पे लास्ट में इंटरेस्ट कभी मिला? सो 31st दिसंबर को मिला। लास्ट में इंटरेस्ट 31st दिसंबर को मिला था, करेक्ट? सो जैन, फेब एंड मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट मिल गया है कि अक्रूड है? सो आंसर इज अक्रूड है। तो यहां पे sorry, accrued interest will come. फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा 10%। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। (31,250). Clear everybody? समझा accrued interest? Yes. Next, 1st June purchase 9,000 debenture, 98x interest और 1% brokerage है। So June 1, डेबिट में आएगा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में परचेज 9,000 into 100, 9 lakh। (9 lakh into 10% into into बोलो कितना मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा? तो लास्ट में इंटरेस्ट कभी हुआ था? लास्ट में इंटरेस्ट वाज ऑन 31st दिसंबर, करेक्ट? सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, जून नहीं आएगा। सो 5 मंथ्स इंटरेस्ट 9 lakh 10%, 37,500। (9,000) कॉस्ट फाइंड करेंगे
into 98 plus 1%. So cost will be 890 820. इसका वर्किंग करवा देता हूँ. वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट 1, calculation of total X interest, purchase price, as on 1st June 2018. $9,000 into 98. $8,52,000. Plus 1% brokerage. Clear everybody? We are done with opening and purchase. फिर इंटरेस्ट है 30th जून इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्रेडिट में आएगा बाय बैंक अकाउंट. ब्रैकेट में इंटरेस्ट. किस पे कैलकुलेट होएगा इंटरेस्ट? So on due date, interest is calculated on outstanding face value. So outstanding face value 12,50,000 plus 9 lakhs, 21,50,000 into 10% to 6/12. डबल आंसर दो. थैंक यू. जून 30th इंटरेस्ट डन. आगे बढ़ते हैं. 1st नवंबर और एक परचेज किया है. सो डेबिट साइड नवंबर 1 टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेज. क्लियर. 12,000 debentures. So 12,000 2 zeros will be 12 lakhs. इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. एक एक कॉलम फिलअप करने का. पहले फेस वैल्यू फिर इंटरेस्ट. 10% इंटू. नाउ इंटरेस्ट के लिए क्या सोचने का? सो लास्ट में इंटरेस्ट कभी मिला था 30th जून. तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीना 4/12 कर. $40,000. प्राइस क्या आएगा? 12,000. हो वर्किंग नोट नंबर 2 ब्रोकरेज है ना. देखो
calculation of total fixed interest purchase price is on 1st November 2018. कौन सा प्राइस दिया है क्वेश्चन में? कम इंटरेस्ट दिया है। कम इंटरेस्ट परचेज प्राइस, जो प्राइस दिया है वहां से ही स्टार्ट करना है, याद रखना। कितना डिबेंचर परचेज किया? 12,000 इंटू 115, so 12,000 into 115, 14 lakh 80,000. into 115, 13 lakh 80,000. ओके, अब ये कम इंटरेस्ट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑलवेज वांट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। इन शॉर्ट वी वांट कॉस्ट एंड इंटरेस्ट सेपरेटली। डू यू एग्री विद दिस? सो दोनों सेपरेट करना पड़ेगा और इसमें ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट माइनस करना है, ब्रोकरेज ऐड करना है। बोलो पहले क्या करेंगे? आंसर इज ऑलवेज गो फॉर ब्रोकरेज फर्स्ट, एंड उसका रीजन सुन लो। ब्रोकरेज ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ट्रांजैक्शन प्राइस. That transaction price can be X interest price, it can be कम interest price. So ये यहाँ पे कम इंटरेस्ट दिया है, उस पे ही ब्रोकरेज कैलकुलेट होगा। फिर इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे होगा? 40,000 था ना इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है 40,000, इंटरेस्ट माइनस, सो विल गेट टोटल एक्स इंटरेस्ट परचेज। ऊपर नोट में किधर लिख लो आप लोग, brokerage is calculated on transaction price. Correct है धवल, very good. 1353,800. 1353,800. Everybody clear? चलो 1 नवंबर भी हो गया। अभी उसके बाद इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कभी आएगा? इट विल बी 31 दिसंबर। सो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट रिसीव करेंगे बाय बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे करते हैं? तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू 12,50,000 प्लस 9,00,000 प्लस 12,00,000, 33,50,000। ड्यू डेट को इंटरेस्ट 6 मंथ्स के लिए आएगा। $167 चेक करो सब लोग। So we are done with interest.
Next 31st Jan we have sale 31st Jan. कितना डिवेंचर बेचा 13,500 सो 15,50,000 का बेचा. 13,50,000 इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इंटू 10% इंटू हाउ मेनी मंथ्स. क्या सोचने का. लास्ट में इंटरेस्ट कभी हुआ था. लास्ट में इंटरेस्ट 31 दिसंबर मतलब 1 मंथ का इंटरेस्ट आएगा. $11 to $15. अभी जब सेल आता है तभी सेपरेट वर्किंग करते हैं हम लोग. कैलकुलेशन ऑफ नेट एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल so on. क्वेश्चन में कौन सा प्राइस दिया है. सेल एट कम इंटरेस्ट प्राइस. सो जो प्राइस दिया वहां से स्टार्ट करने का. कम इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस कितना है 13,500 इंटू 110 14,85,000. अभी मेरे को आंसर दो. ये कम इंटरेस्ट प्राइस है मतलब इसमें इंटरेस्ट भी है. करेक्ट. तो पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे एंड ब्रोकरेज भी माइनस करना पड़ेगा. करेक्ट. सेल के टाइम पे ब्रोकरेज माइनस होता है. अभी सोच समझ के बोलना. पहले ब्रोकरेज लो कि पहले इंटरेस्ट लो. सो पहले ब्रोकरेज लेने का बिकॉज ब्रोकरेज विल बी कैलकुलेटेड ऑन ट्रांजैक्शन प्राइस. फिर इंटरेस्ट माइनस कर दो. इंटरेस्ट ऊपर फाइंड किया ही रहेगा हमने. 11,250 चेक करो सब लोग. $14,58,900 इसको बोलते हैं नेट एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस. 14,58,900. क्लियर एवरीबॉडी. अभी प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है. प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है. तो वी विल कंपेयर सेलिंग प्राइस. जब भी सेल आएगा तभी प्रॉफिट आएगा और जब भी सेल आएगा तभी प्रॉफिट और लॉस आएगा और जब भी प्रॉफिट और लॉस आएगा एक सेपरेट वर्किंग करना पड़ेगा. सो प्रॉफिट और लॉस फाइंड कैसे करेंगे. वी विल कंपेयर सेलिंग प्राइस विथ कॉस्ट प्राइस. अब ये कॉस्ट कैसे फाइंड करना है. हाउ टू फाइंड आउट दिस कॉस्ट. तो क्वेश्चन में बोला है FIFO.
क्लियर एवरीबॉडी? लास्ट क्वेश्चन में वेटेड एवरेज किया था, यहाँ पे हम फीफो मेथड से करेंगे। नाउ व्हाट इज फीफो मेथड? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले सेल हुआ रहेगा। हाँ, अभी मेरे को आंसर दो इधर बेटा, बेटा आंसर दो, कितना यूनिट सेल किया? तो 13,500 यूनिट सेल किया हमने, 13,500 डिबेंचर सेल किया। कोई बताएगा कौन सा वाला बेचा रहेगा? तो ओपनिंग बैलेंस वाला हमने बेचा रहेगा, पूरा 12,500 इधर से बेचा रहेगा, करेक्ट? और बाकी का 1,000 डिबेंचर्स ये परचेस में से बेचा रहेगा। सो 1250 पूरा बेचा रहेगा और इसमें से 1,000 बेचा रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? आई कैन से दैट ये 12,50,000 वाला उसका कॉस्ट कितना था? 1225। सो ये हमारा 1225 का पूरा कॉस्ट है, ये बेच दिया है। प्लस अभी और 1,000 डिबेंचर किधर से बेचा? ये ओपनिंग वाले हैं और ये परचेस वाले हैं। सो ये 9 लाख जो था ना बेटा, ये 9 लाख उसका कॉस्ट था 890,820 890,820। इसमें से हमने 1,000 डिबेंचर्स बेचे, तो उसका कॉस्ट कितना? ओपनिंग बैलेंस वाले पूरे बेच दिए, उसका कॉस्ट 12,25,000 था। परचेस वाले पूरे नहीं बेचे, परचेस 9,000 किए थे बट उसमें से सिर्फ 1,000 बेचे, तो उसका कॉस्ट 98,980। चेक करो सब लोग। ये दोनों ऐड कर दो, ये भी बेचा हमने, जो बेचा उसका कॉस्ट इतना है, और इधर ये बेचा, ये दोनों का कॉस्ट ऐड कर दो, ये दोनों ऐड कर दो, तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस इज मोर, सो देयर विल बी अ प्रॉफिट। कितना आ रहा है प्रॉफिट? 134,920। अब ये प्रॉफिट का एंट्री क्या है? अब आपको ये समझा, फीफो मेथड है तो लॉट वाइज कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, करेक्ट? कि ओपनिंग में से कितना बेचा तो ओपनिंग का कॉस्ट इतना, परचेस में से कितना बेचा तो उसका ये आएगा। सो 134,920 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट का एंट्री आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट।
ये हो गया अपना सेल, दैट्स इट। अभी बोला है मार्केट वैल्यू, सो 31 मार्च इज ईयर एंडिंग, ईयर एंड को वैल्यू करेंगे तभी मार्केट वैल्यू काम आएगा। चलो, सो सब कंप्लीट हो गया। दोनों साइड पे टोटलिंग स्टार्ट करो। पहले फेस वैल्यू कॉलम का टोटल करो। 33,50,000 आएगा, चेक करो। -13,50,000। फर्स्ट कॉलम समझा। अभी सेकेंड कॉलम, इंटरेस्ट कॉलम। इंटरेस्ट के लिए अपने को है ना बेटा, क्रूड इंटरेस्ट कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? ये 20 लाख जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पर लास्ट में इंटरेस्ट कभी मिला था, तो उस पर बेटा लास्ट में इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला था। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है। अक्रूड इंटरेस्ट 50,000। अभी इंटरेस्ट कॉलम क्लोज करो। इंटरेस्ट कॉलम क्लोज करके जो भी बैलेंस आएगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर करो। टू पीएनएल अकाउंट। फिगर दे दो। डबल चेक करो। डबल पीएनएल डेबिट नहीं, इंटरेस्ट पीएनएल क्रेडिट में जाएगा, इन्वेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट में आएगा। समझा? इंटरेस्ट टू पीएनएल, पीएनएल क्रेडिट होगा बिकॉज इंटरेस्ट हमारा इनकम है ना। अभी थर्ड कॉलम क्लोज करो। कॉस्ट। कितना आ रहा है?
ओके एक जन को डाउट आया है सर 227,500 कैसे आया और ये मेक शाह लिसन बेटा इंटरेस्ट कॉलम क्लोज करेंगे एंड उसका बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे सो इंटरेस्ट इज अवर इनकम क्रेडिट साइड का टोटल करो माइनस डेबिट साइड करो इंटरेस्ट का और फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको पीएनएल में ट्रांसफर करो interest is a nominal account should be transferred to P&L at the end of the year हाँ अभी मेरे को फिगर तो दो कॉस्ट कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर धवल निनाद मेक 2145 640 आ रहा है परफेक्ट बट लिखना नहीं बिकॉज वैल्यूएशन है वर्किंग नोट नंबर 4 valuation of closing investments cost 2145 640 or fair value that is market price 115 है how many debentures we have at the end so face value column 20 lakhs मतलब 20,000 debentures into 150 20,000 into 1.5 23 lakhs whichever is sorry lower so cost is lower 2145 640 clear everybody done that's it this is the end of second question I hope everybody understood this here पक्का डन एवरीबॉडी सबका हुआ लिख के चाहिए सॉल्यूशन बताओ क्या बताओ वर्किंग चाहिए मेन सॉल्यूशन देख लो ये रहा चलो now we will learn concept of conversion of fixed income bearing securities into fixed income bearing security मतलब you can say debentures into variable
income bearing सिक्योरिटीज मतलब इक्विटी शेयर्स। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे क्या होने वाला है, डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में अभी कन्वर्ट होने वाला है। सो अगर डिबेंचर्स इक्विटी शेयर में अगर कन्वर्ट होगा तो उसका अकाउंटिंग कैसे करने का, उसके रिलेटेड वी हैव वन क्वेश्चन, वी विल टॉक अबाउट इट। करेक्ट, चलो सोचो, what would be the journal entry, what would be the journal entry, कन्वर्शन का एंट्री क्या आएगा? एंट्री फॉर कन्वर्शन, अगर डिबेंचर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुआ, व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? ओके गुड, नमीशा, मीनाद, वेरी गुड। मतलब मैं इन्वेस्टर है, वी शुड थिंक फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। I will give my debentures back to the company and company will convert that into equity shares and company will give me equity shares. So for me entry will be investment in equity shares account debit. We have to think from whose point of view? Investors point of view. Investment in equity shares account debit to investment in debentures account. Investment in equity shares account debit to investment in debentures account. And important point, ये हिडन रहेगा ऑलवेज। इंटरेस्ट shall be received from the company from last due date to the date of conversion। ये ऑलवेज हिडन रहेगा, भूलने का नहीं। जो दिन डिबेंचर कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी शेयर्स में, वो दिन तक का इंटरेस्ट मैं कंपनी के पास से रिसीव करेगा। बस कन्वर्शन इतना ही है, इस पे हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन करने को भी वापस अपने को हाफ एन आवर 45 मिनट्स लगेगा। हम एक काम करते हैं, हम ये स्टेज पे ब्रेक लेते हैं। करेक्ट, या ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद क्या करेंगे सुन लो। वी विल सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन कन्वर्शन, उसके बाद में वी विल गो फॉर इक्विटी शेयर्स, उसके बाद में वी विल टॉक अबाउट वैल्यूएशन एंड देन रीक्लासिफिकेशन। सो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे। अग्रीड? या ओके, so we will go for break. We will go for half an hour break. It is 9:45 in the clock. We will gather at 10:15 sharp. I will start. Done? Yes, welcome back guys. I hope everybody is in. I will start with question number 3. Bharat Finance Limited
purchased on 1st May 2010 13.5% convertible debentures in Glance Limited of the face value of rupees 1 lakh at 105. So purchase hai. Interest on debenture is payable on 31st March, 30th September. Following were the other transactions with regard to these debenture carried by Bharat Finance Limited in 2010-11. 1st August purchase, 31st October sold, 30th November. This is important. This is receipt of 2,200 equity shares in Glance Limited of 10 rupees each in conversion of 20% of the debentures held. Correct? So conversion wala entry aayega. Then purchase 1,000 equity shares in Glance Limited. Market value of debenture and equity shares 96 and 15 rupees. The accounting year of the Bharat Limited is a calendar year. Prepare investment account in the books of Bharat Limited on weighted average cost basis. ये समझा कि नहीं समझा? Let us prepare. Investment in interest due dates 31st March, 30th September. सो एक डिबेंचर अकाउंट बनेगा, और एक अकाउंट बनेगा
इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स अकाउंट क्या बोला है, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स. In this question, debentures are converted into equity shares, so we will prepare two accounts, investment in debenture and investment in equity shares. So दोनों account बनेगा. इक्विटी शेयर में कॉलम्स क्या होते हैं, शेयर्स, डिविडेंड, या ग्रुप पे पीडीएफ आ जाएगा तो बेटा मुझे कंफर्मेशन देना. आई आस्क कंसर्न पर्सन टू शेयर पीडीएफ विथ यू. ओके डन डन. उसमें सारे चैप्टर्स रहेंगे बेटा. सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अटेंड ऑल द लेक्चर्स. बिलीव मी यू विल बी इन कंफर्ट जोन. स्टार्ट करो या ओके. फर्स्ट ट्रांजैक्शन, भारत फाइनेंस लिमिटेड परचेस ऑन 1st May 2010 13.5% डिबेंचर. कितना रुपीज, 1 लाख at 105. सो डेट, कैलेंडर ईयर, there is no opening balance, so investment account debit to bank account, bracket purchase. Correct. Face value 1 lakh. One lakh into 13.5% डिबेंचर into, now into what? तो लास्ट में इंटरेस्ट कभी हुआ था? लास्ट में इंटरेस्ट 31 मार्च को हुआ था. सो अप्रैल में नहीं आएगा बिकॉज इट इज 1st May. ओनली 1 month इंटरेस्ट. अमाउंट बोलो. ओके. क्या प्राइस में परचेस किया? 105.
we are assuming 105 is x interest price. If nothing is given, it is always x interest. So 1000 debentures into 105, 1,05,000. Are you all comfortable, guys? क्या complete किया? First transaction, purchase is over. Correct? Next, 1st August, again purchased. डेबिट में आएगा, परचेस किया तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक. कल से है ना बेटा थोड़ा वीडियो ऑन रखेंगे आप लोग. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्विच ऑन योर कैमरास. आज ठीक है, इन्फॉर्म कर रहा हूं, बट कल से कंपलसरी ऑन रखें. करेक्ट? या थैंक यू धवल, थैंक यू सो मच. 50,000 रुपीज. %13.5% इंटू हाउ मेनी मंथ्स. बोलो लास्ट में इंटरेस्ट कभी हुआ था? लास्ट में इंटरेस्ट 31 मार्च को हुआ था. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 1 है तो अगस्त नहीं आएगा. इट विल बी 4 मंथ्स. कितना आ रहा है बोलो, मल्टीप्लाई करो. 2250. क्या प्राइस है? 107 कम इंटरेस्ट, मतलब 500 डिबेंचर परचेस किए हैं. देखो 50,000 फेस वैल्यू है, डिवाइड बाय 100 करने का तो नंबर ऑफ डिबेंचर मिलेंगे 500 इंटू 107. कम इंटरेस्ट 53,500. कम इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, अपने को माइनस करने का 2250. 51 to 50 विल बी एक्स इंटरेस्ट प्राइस. क्लियर एवरीबॉडी? ओके गुड. 1 अगस्त हो गया. अभी 1 अगस्त के बाद में ना इंटरेस्ट आएगा. कभी आएगा इंटरेस्ट? 30 सितंबर इंटरेस्ट. किस पे इंटरेस्ट आएगा? आउटस्टैंडिंग फेस वैल्यू पे. 1,50,000 इंटू 13.5% एंड ड्यू डेट को इंटरेस्ट 6 मंथ्स के लिए आएगा. सो 1,50,000 इंटू 13.5% इंटू 6/12, 10,125. आर यू कंफर्टेबल? क्लियर? वेरी गुड. सो वी आर डन विथ इंटरेस्ट. उसके बाद 31 अक्टूबर को सोल्ड. सो अक्टूबर 31 सेल क्रेडिट साइड पे आएगा. $40,000. कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा? 1 मंथ, क्योंकि लास्ट में इंटरेस्ट कभी हुआ था? सितंबर 30. तो एक अक्टूबर महीने का इंटरेस्ट आएगा सिर्फ. $450. चेक करो धवल, करेक्ट है बेटा? आगे बढ़ेंगे. क्या प्राइस में सेल किया? 103. कुछ नहीं बोला है तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस रहेगा, दैट इज 41,200. हाँ, अभी जब सेल होगा तभी तभी सेपरेट वर्किंग करेंगे. सो कैलकुलेशन ऑफ
profit or loss on sale is on 31st October 2010. What we will compare? We will compare X interest selling price. X interest selling price कितना है? 400 डिबेंचर सोल्ड 103 41 200 है. इसको किससे कंपेयर करेंगे? एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट. कॉस्ट कैसे फाइंड करने का? सो कॉस्ट विल बी डिटरमाइंड बाय वेटेड एवरेज मेथड. One lakh 5,000. $50,000 51 250. चेक करो ये आ रहा है क्या? Selling price is less. चेक करो स्कॉलर्स, समझा? एंट्री बोलो लॉस का. P&L डेबिट होगा. Clear everybody? Yeah, we are done with 31st October. आगे 30th November क्या हो रहा है? We are receiving 2,200 equity shares in Glance Limited in conversion of only 20% of the debenture. बोलो पूरा डिबेंचर कन्वर्ट हो रहा है कि only 20%? Only 20%. पहले मेरे को जर्नल एंट्री पास करके दो. व्हाट इज द एंट्री फॉर कन्वर्शन ऑफ debentures into equity shares? So entry will be investment in equity shares account debit to investment in debentures. November 30 investment in equity share के डेबिट में to investment in debentures account. Second effect,
करेक्ट। अभी कन्वर्शन का वर्किंग करना पड़ेगा। कैसे करना है, मेरे साथ रहना। अभी 20% डिबेंचर कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे पास कितने डिबेंचर्स हैं पहले वो फाइंड करना पड़ेगा, उसमें से 20% कन्वर्ट कर देंगे। सो 1 लाख, 1,05,000 ओपनिंग, आई कैन से फर्स्ट परचेज था 1 लाख, 1,05,000। दूसरा परचेज 50,000, 51,250। क्रेडिट में चेक करो, 40,000 सेल कर दिया है, 41,200। अब ये 41,200 कौन सा प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। मेरे को कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें लॉस भी था 467 का, तो वो भी लेगा मैं। तो ये दोनों मिला के मेरा कॉस्ट रहेगा, 41,200 माइनस किया, 467 लॉस भी माइनस किया, तभी जाके मेरा कॉस्ट आएगा ना। सो यू कैन चेक, जो हमने सेल किया ना उसका कॉस्ट 41,667 था, तो एक्चुअली इधर 41,667 लेना चाहिए था, बट मैंने 41,200 एंड 467 सेपरेटली लिया। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। तो अभी हमारे पास डिबेंचर्स कितने हैं, 1,10,000 के फेस वैल्यू वाले हैं, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, और आई कैन से बैलेंस, इतना बैलेंस हमारे पास अभी है। ये टोटल करके दो, 1,05,000, 56,250 माइनस 41,667, 119,53 आ रहा है, चेक करो ये। ओके, एक सेकेंड, 114 आएगा, 1,05,000 है, सॉरी 114,583 आ रहा है क्या, चेक करो। यस, इसमें से कितना कन्वर्ट हो रहा है, सो 20% कन्वर्ट हो रहा है, देयरफॉर कन्वर्टिबल पोर्शन, इसमें से 22,000 फेस वैल्यू, कॉस्ट का भी 20% निकालो, ये कितना आ रहा है, $22,917। Have you understood this? फेस वैल्यू तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, एंट्री बोल दो ना, इन्वेस्टमेंट $22,917। तो देखो इधर डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे फेस वैल्यू 22,000, बिकॉज 22,000 वी हैव टू रिमूव फ्रॉम दिस अकाउंट, कॉस्ट 22,917 ये भी हमें निकालना है ये अकाउंट से,
So 22,000 and 22,917. Did you understand this? इधर भी कॉस्ट कितना आएगा 22,917. मतलब जो डिबेंचर्स मैंने दे दिया उसका कॉस्ट 2297 था, उसके सामने 2200 इक्विटी शेयर मिला, उसका भी कॉस्ट 22,917 ही रहेगा. हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स वी हैव रिसीव्ड? 2200 इक्विटी शेयर्स. चेक करो जो मैंने लिखा हो बरोबर है क्या, आपको समझा क्या? हैव यू अंडरस्टूड दिस? पक्का? हाँ, अभी 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 एक चीज भूलने का नहीं, ये एग्जाम में भी भूलेगा और वेकेशन में याद आएगा. इंटरेस्ट हिडन है इधर, हिडन. वी हैव टू रिमेंबर दैट इंटरेस्ट. सोच समझ के आंसर देना. कौन से दिन पे कन्वर्ट हुआ डिबेंचर? नवंबर 30 को कन्वर्ट हुआ. लास्ट में इंटरेस्ट कभी मिला था? लास्ट में इंटरेस्ट ड्यू डेट देखो 30 सितंबर को मिला था. करेक्ट. अक्टूबर एंड नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट वी हैव टू कंसिडर. मतलब ये 2 महीने का इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे. ये ऑलवेज हिडन रहेगा, याद रखना. एंट्री क्या आएगा बोलो? किस पे मिलेगा ये? 22,000, 13.5%, 2/12. $495 आ रहा है क्या? $495. जो डिबेंचर कन्वर्ट हुआ उसका इंटरेस्ट कंपनी हमें पे करेगा. आई होप एवरीबडी गॉट दिस. सुनाई दे रहा है बेटा? एम आई ऑडिबल नीनाद? ओके, अभी ठीक है. धवल, पार्टिसिपेंट म्यूट नहीं है. ओके, ठीक है. डन एवरीबडी? चलो, यहां तक हुआ. सो वी आर डन विथ 30 नवंबर. फटाफट आंसर दो आगे. दिसंबर 15 को क्या हुआ? परचेस 1000 इक्विटी शेयर. किसने परचेस किया? हमने अभी इक्विटी शेयर परचेस किया. 1000 इंटू 16. सो इक्विटी शेयर 15 दिसंबर को परचेस किया, तो इक्विटी शेयर अकाउंट में आएगा. इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेज.
1000, 16,000. बोलो, क्लियर एवरीबॉडी? मैनेजेबल? दैट्स इट. सारे ट्रांजैक्शंस हो गए. अभी मार्केट वैल्यू दिया है, ईयर एंडिंग को मार्केट वैल्यू कंसिडर करेंगे. स्टार्ट करूं? चलो क्लोज करो. फेस वैल्यू कॉलम क्लोज करो. चेक करो 88,000 आया क्या? करेक्ट. Now on your end, we have to check कि इंटरेस्ट अक्रूड है कि नहीं. तो उसके लिए क्या सोचने का, लास्ट में इंटरेस्ट कभी हुआ था? लास्ट में 30 सितंबर को हुआ था. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है. $88,000 into 13.5% into 3/12. क्लियर? अभी फाइनल वैल्यू फाइंड करो. इंटरेस्ट का बैलेंस फाइंड करो. इंटरेस्ट किधर ट्रांसफर होगा? पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे. बैलेंसिंग फिगर है इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल. अमाउंट दे दो. $10,665. चेक करो सब लोग. करेक्ट एवरीबॉडी? अभी कॉस्ट कॉलम क्लोज करो. फिगर लिखना नहीं, सिर्फ फाइंड करके दो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, क्योंकि मार्केट वैल्यू दिया है सो वैल्यूएशन करना पड़ेगा. वर्किंग नोट 3, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट. पहले 13.5% डिबेंचर्स का बात करेंगे. कितना है कॉस्ट? कितना है बोलो? 91,667. ₹96 दिया है. वी हैव 880 डिबेंचर एट द एंड इंटू 96. देखो आया 84,480. मार्केट प्राइस इज लोअर. अगर मार्केट प्राइस कम है देन देयर विल बी अ लॉस. उसको बोलते हैं लॉस ऑन
वैल्यूएशन कितना आ रहा है डिफरेंस? क्लियर एवरीबॉडी? चेक कर लो। अनाहिता बेटा चेक करो बराबर। ओके अभी विच एवर इज लोअर 84 480 पे वैल्यूएशन करना है। 84 480 84 480 and there is a loss by P&L, loss on valuation 7187. I hope you got this. समझा ये सबको? क्या कंप्लीट किया? क्या कंप्लीट किया हमने? डिबेंचर का वैल्यूएशन। अभी इक्विटी शेयर्स में आओ, क्लोज करो इक्विटी शेयर्स 3200 3200। यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं बनाया हमने, हमने नंबर ऑफ शेयर्स का कॉलम बनाया। So we have 3200 balance in the figure. There is no dividend. अभी कॉस्ट फाइंड करो। वैल्यूएशन है, वापस आ जाओ वैल्यूएशन में। इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन करना है। कॉस्ट $30,8917। market price 3200 shares into 15 48,000। whichever is lower, this is lower 38,917। so cost भी lower है, टेंशन नहीं है। That's it. Have you understood this, guys? Tell me you understood this question. Scholars, charters, समझा नहीं समझा? कुछ बाकी है? निनाद वर्किंग बाकी है? ऊपर वाला डिबेंचर अकाउंट ओके देखिए डन ओके।
वी आर डन विथ विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3. मतलब हमने डिबेंचर के 2 सम किए, एक कन्वर्जन का सम किया, करेक्ट. एंड अभी वी विल गो फॉर इक्विटी शेयर क्वेश्चन. देखो एग्जाम में ज़्यादा चांसेस इक्विटी शेयर्स के होते हैं, करेक्ट. इक्विटी शेयर का दिस इज स्टैंडर्ड प्रॉब्लम. everyone is doing this particular question and we can expect this type of question in the exam. This is exhaustive question based on investment in equity shares. अभी ये क्वेश्चन करने को अपने को थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसके पहले एक 15-20 मिनट्स थोड़ा करके थियरी पढ़ेंगे, करेक्ट. वो थियरी दूंगा, वो थियरी के बेसिस पे ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे. बिलीव मी, जितनी भी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आई कैन से इक्विटी शेयर्स का मेजॉरिटी चांस है. 70-80% चांसेस इक्विटी शेयर्स के हैं, 30% चांसेस डिबेंचर्स के हैं, करेक्ट. अगर इक्विटी शेयर का क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आने का ही चांसेस होता है. दे विल चेंज नेम्स एंड नंबर्स, बाकी यही टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं एग्जाम. क्लियर? शैल आई प्रोसीड? Before this, we will start with theory. Heading though, next heading. Sorry. Variable income bearing security. आराम से. In this we will have investment in equity shares. स्टार्ट करो. चलो मेरे को बोलो, इन्वेस्टमेंट किया है हमने रिलायंस के इक्विटी शेयर्स में, क्या क्या ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है? डिबेंचर्स में 3 ट्रांजैक्शन पॉसिबल थे, परचेज, सेल, इंटरेस्ट. इक्विटी शेयर में 5 ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है, परचेज, सेल, बोनस, राइट्स एंड डिविडेंड. ये 5 ट्रांजैक्शंस रहेंगे और एक एक परचेज सेल बहुत सिंपल है, दैट यू आर अवेयर ऑफ. जो भी इंपॉर्टेंट है बोनस, राइट्स एंड डिविडेंड. उसमें भी बोनस एंड राइट्स भी फिर भी ठीक है, जो भी है वो डिविडेंड. क्लियर? सो कॉन्सेप्ट ओपन करते हैं. नाउ इट इज वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी, मतलब डिविडेंड का रेट, इनकम का रेट एंड डेट्स आर नॉट फिक्स्ड, करेक्ट. तो यहां पे हर ट्रांजैक्शन में डिविडेंड कंसिडर नहीं कर सकते.
We cannot consider dividend in all the transactions. यहाँ पे जब भी डिविडेंड का ट्रांजैक्शन दिया रहेगा तभी ही डिविडेंड का अकाउंटिंग करना है. Agreed? Yeah? Okay. What is the journal entry for purchase of investment? देखो बहुत सिंपल एंट्री है. Investment in equity shares account debit to bank account. Investment in equity shares account debit to bank account. Clear? Second, sale of investment. Entry bank account debit to investment account and profit or loss on sale is to be transferred तो जब भी सेल आएगा तभी तभी प्रॉफिट और लॉस आएगा. वी हैव टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस एंड ट्रांसफर टू P&L. हुआ यहां तक? नेक्स्ट, बोनस शेयर्स. अब एक काम करो, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स एंड डिविडेंड, ये तीनों के लिए 1.5 पेज छोड़ दो. ये जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी इसका मैं थियरी आपको देगा और उसका ट्रीटमेंट में बताएगा. करेक्ट? या ओके. सो परचेस एंड सेल 2 ट्रांजैक्शन हुआ, बाकी का तीनों ट्रांजैक्शन वी विल डिस्कस व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार डिटेल में रीड करो जल्दी. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. I will read now. Pay attention. On 1st January 2011, Mr. Singh had 20,000 equity shares in X Limited.
Face value, that is nominal value, 10 rupees each. Book value was 16 rupees each. On 1st June 2011, Mr. Singh purchased another 5,000 shares at a premium of 4 rupees per share. At a premium of 4 rupees मतलब 10 rupees face value plus 4 rupees, 14 rupees में purchase किया. On 30th June 2011, the directors of X Limited announced what? A bonus and right issue. Bonus was declared 1 equity share for every 5 shares held, that is called as 1:5. Bonus shares were received on 2nd August 2011. Okay. The terms of the right issue were right shares to be issued to the existing holders on 10th August. Right issue would entitle the holders to subscribe to additional equity shares in the company at the rate of 1 share for every 3 shares held. Right shares 1:3. And the whole sum being payable on 30th September 2011. Existing shareholders were entitled to transfer their rights to outsiders, either wholly or in part. Singh exercised his option under the issue for 50% of his entitlement, and balance he will sell to Mr. Anant for a consideration of 1.5 per share. Okay, so A, B, C and D ये 4 information rights के बारे में. Fifth, they are talking about dividend. Then 6th, they are talking about sale. 1st November, Singh sold 20,000 equity share at a premium of 3 rupees per share. So ये sale है. The market price 14 rupees is given. Show investment account as it would appear in the books of Mr. Singh on 31st December 2011. And the value of shares on that date. Okay. 31st December 2011. Okay. Have you understood this question? पहले format बनाते हैं. Let us start with the question. 3 concepts are pending. We will discuss 3 concepts along with solution. Ready? Start करो. 1st January 2011.
to balance brought down. $20,000 equity shares, dividend nil, cost 3,20,000. Correct? Opening balance done. 1st June 2011. $5,000. Equity shares purchased. What is the price? 14 rupees per share, 4 rupees premium. So 70,000. चेक करो यहां तक समझा क्या सबको? सी इक्विटी शेयर का सम कैसे मालूम है? फटाफट सॉल्व हो जाता है क्योंकि डिविडेंड हर बार कैलकुलेट नहीं करना है. करेक्ट? सो ओपनिंग बैलेंस डन, परचेज डन. अभी आगे बढ़ते हैं. Company announced on 30th June. Company announced bonus shares and right shares. Bonus issue and right issue. Bonus was declared in 1:5. Correct? One equity share for every 5 shares held. And bonus shares were received on 2nd August 2011. अभी पहले बोनस का थियरी में आते हैं. चलो पहले थियरी कवर करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग अकाउंट में इफेक्ट देंगे. बरोबर है? मेरे साथ रहना. Tell me, bonus shares received by the investor. Like मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं रिलायंस के, और रिलायंस ने मुझे अभी 1:1 का बोनस दिया था. तो मेरे को 1000 शेयर्स थे मेरे पास, रिलायंस ने और मुझे 1000 शेयर्स फ्री दिए. Bonus shares are nothing but free shares given by company to its existing equity shareholders. It is without any consideration. Correct? Yeah. If Reliance will give me bonus shares, Reliance क्या entry pass करेगा? That is in the books of company. That is, I can say Reliance will pass journal entries like reserves में से bonus shares देगा तो reserves कम हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा. दैट इज फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. बट इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री इफ बोनस शेयर्स आर रिसीव्ड? बोलो क्या एंट्री आएगा? रमीशा वेरी गुड. यस धवल, व्हाट इज द एंट्री? निनाद, अनाहिता, तन्वी, मेघ. बोनस शेयर्स रिसीव्ड. ओके धवल, एनी ओपिनियन बेटा? ओके गुड. चलो सुनो. एंड द आंसर इज bonus shares received by the investor will have no entry in the books of investor. It will just increase number of shares. तो सिर्फ number of shares कॉलम में फिगर लिखेंगे. There will be no cost because हमने कुछ पे नहीं किया है तो कॉस्ट ही इन्वॉल्व नहीं है. So there is no cost incurred for getting bonus shares. So cost column में कुछ नहीं आएगा. And if you know
कॉस्ट कॉलम इज योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, शेयर्स कॉलम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बनाते हैं, करेक्ट. सो बोनस शेयर्स रिसीव्ड विल हैव नो एंट्री, ओनली नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज and cost, average cost per share will decrease. Agreed? लिखो इधर, बोनस शेयर्स no entry is required in the books of investor, only cost per share will decrease. सच बोलो, ये समझा कि नहीं समझा? गुड. सी आई अप्रिशिएट दैट कि आप लोग ने ना मुझे आंसर दिया. सी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर, आप एटलीस्ट ट्राई करो. If you are wrong, I will rectify you. Don't worry. You are here for learning. You can commit errors. I can say professional can commit errors. तो आप लोग तो कर ही सकते हो. But professional don't repeat errors. They don't repeat. Likewise, you should not repeat the same error. I hope you are understanding this. Yeah? आगे बढ़ते हैं. So आ जाओ वापस इधर अपने क्वेश्चन में. बोनस शेयर्स, वर्किंग नोट नंबर 1. bonus and held. One is to 5. अभी बोलो, बोनस शेयर किसको मिलेंगे? हम इन्वेस्टर हैं, हमको मिलेंगे. हाउ मेनी एग्जिस्टिंग शेयर्स वी हैव? 25,000 शेयर्स हमारे पास हैं, तो हमें 25,000 पे बोनस शेयर्स मिलेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 5,000 बोनस शेयर्स. अभी मेरे को बोलो, 5,000 बोनस शेयर्स जो मिलेंगे उसका कोई एंट्री नहीं आएगा, बट एटलीस्ट नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम में तो लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज इट विल इंक्रीज अवर नंबर ऑफ शेयर्स. तो मैं यहां पे लिखेगा, कौन से डेट को मिला अपने को बोनस शेयर्स? 2 अगस्त. टू बोनस शेयर्स, वर्किंग नोट 1, 5,000 shares. Cost is nil. Cost is 0.
ये कॉस्ट जीरो है, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया. शेयर्स कॉलम इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन. डू यू अग्री विद दिस? एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री आएगा कि नहीं आएगा? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री आएगा. वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. बोनस इज डन. नेक्स्ट इज राइट शेयर्स. आ जाओ, वापस थियरी में आओ. ये आपको समझ रहा है अपना मेथड? पक्का? लिखो इधर. What do you mean by right shares? Right shares are those shares which are offered by the company to its existing shareholders at a price which is lower than the market price. Correct? Then investor, see कंपनी ने राइट शेयर्स ऑफर किया इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को. देन इन्वेस्टर हैज द following options. Investor has the following options. करेक्ट? सुनना अच्छे से. कंपनी ने इन्वेस्टर को राइट शेयर्स ऑफर किए हैं. इन्वेस्टर के पास 3 ऑप्शन है. रिजेक्ट द ऑफर. अगर ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो क्या आएगा? नो एंट्री. सेकेंड, एक्सेप्ट द ऑफर. एंड सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स.
accept the offer and subscribe for the shares. मतलब परचेज का एंट्री आएगा, इन्वेस्टर विल परचेज द शेयर्स. क्या एंट्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नॉर्मल परचेज का एंट्री आएगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? And next, renouncement of rights. Renouncement of rights. Renouncement of right मतलब सेल ऑफ शेयर्स नहीं बेटा, शेयर नहीं बेच रहे हैं, राइट्स बेच रहे हैं. इट इज ट्रांसफर ऑफ राइट्स. कंपनी ने मुझे ऑफर दिया है कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स कम भाव में खरीद सकते हो, बट मुझे परचेस नहीं करना है, तो मैं मेरा राइट थर्ड पार्टी को सेल कर सकता हूं. दैट इज कॉल्ड एज रिनाउंसमेंट ऑफ राइट्स, सेल ऑफ राइट्स, ट्रांसफर ऑफ राइट्स. उसमें मुझे क्या मिलेगा? तो आई विल गेट रिनाउंसमेंट प्रीमियम. Shall be received by the investor. It is to be transferred to P&L. है जगह इसके नीचे तो लिखो, एंट्री लिख लो. बैंक अकाउंट डेबिट टू रिनाउंसमेंट प्रीमियम अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू रिनाउंसमेंट प्रीमियम अकाउंट. एंड सेकेंड एंट्री नीचे, रिनाउंसमेंट प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू P&L. Renouncement premium to P&L. बोलो, यहां तक कॉन्सेप्ट समझा राइट्स का? पक्का? स्टार्ट करूं आगे? या ओके. अभी ध्यान देना, मेरे साथ रहना. राइट शेयर्स, राइट इश्यू का बात करते हैं अभी. क्या रेशियो में है? राइट्स आर इन 1:3. जिसके पास 3 शेयर रहेगा उसको 1 राइट शेयर मिलेगा. अभी चेक करो मिस्टर सिंह के पास कितने शेयर्स हैं. सो ओपनिंग 20,000 थे, प्लस 5,000 परचेज किए, प्लस 5,000 फ्री मिले. सो वी हैव 30,000 शेयर्स विद अस. सो 10,000 राइट शेयर्स आएंगे,
अभी आगे पढ़ो क्वेश्चन में। राइट शेयर्स 10th अगस्त को इश्यू करेंगे। राइट शेयर्स वुड बी एंटाइटल द होल्डर्स टू सब्सक्राइब एडिशनल इक्विटी शेयर एट 1 शेयर फॉर 3 हेल्ड एट 15 रुपीज एन अमाउंट पेएबल ऑन 30th September. ओके, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर राइट्स आइदर होलली और इन पार्ट, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट ट्रांसफर कर सकता है, रिनाउंस कर सकता है। अकॉर्डिंगली सिंह एक्सरसाइज्ड हिज ऑप्शन अंडर द इश्यू फॉर 50% ऑफ हिज एंटाइटलमेंट, मतलब 50% राइट्स वो बेच रहा है मिस्टर अनंत को, एंड बाकी का 50% खुद सब्सक्राइब कर रहा है। सो सब्सक्राइब 50% and renounced remaining 50%. क्या भाव पे सब्सक्राइब करेंगे? 15 रुपीज पर शेयर। करेक्ट। और रिनाउंस क्या भाव पे करेंगे मिस्टर अनंत को? 1.5, मतलब 7,500 विल बी रिनाउंसमेंट प्रीमियम। कहाँ जाएगा ये? ट्रांसफर टू पीएनएल। क्लियर एवरीबॉडी? ये पीएनएल में जाएगा, हम पीएनएल नहीं बना रहे हैं, सो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप बोलेगा नहीं नहीं सर एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिनाउंसमेंट प्रीमियम, रिनाउंसमेंट प्रीमियम टू पीएनएल। हम बैंक अकाउंट भी नहीं बना रहे हैं, रिनाउंसमेंट प्रीमियम भी नहीं बना रहे हैं, पीएनएल भी नहीं बना रहे हैं, सो इसका इफेक्ट नहीं देना है। डू यू अग्री विद दिस? इधर सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मतलब ये शेयर हम परचेस करेंगे। अगर शेयर हम परचेस करेंगे तो इसका एंट्री आएगा। कौन से डेट को पेमेंट करना है? लास्ट डेट 30th September, सो 30th September को एंट्री आएगा। September 30 एंट्री बोलो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ब्रैकेट में लिखो राइट शेयर्स, ब्रैकेट में लिखो वर्किंग नोट 2, और शेयर्स कितने हैं? 5,000। क्या भाव में परचेस करेंगे? 15 रुपीज, दैट इज 75,000। बोलो ये समझा कि नहीं समझा? क्लियर एवरीबॉडी? या ये राइट्स कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट डिविडेंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप सुन लेना। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमको क्रैक करने को, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अभी मेरा पॉइंट नंबर 5 के लिए ऊपर जगह नहीं है, आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट पार्ट। जिधर जगह रहेगा उधर लिखना। पॉइंट नंबर 5, लास्ट थियरी of this variable income bearing securities. अपने को डिविडेंड का अकाउंटिंग सीखना है। आई कैन से डिविडेंड रिसीव्ड का अकाउंटिंग सीखना है। स्टार्ट करो। There are two types of dividend. One is final dividend, other is interim dividend. Correct?
फाइनल डिविडेंड क्या होता है, सुन लेना अच्छे से। सी, दिस इज द ईयर ऑफ द कंपनी, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025, करेक्ट। ईयर एंड आया 31 मार्च 2025। इसके बाद में कंपनी विल प्रिपेयर इट्स फाइनल अकाउंट्स, करेक्ट। इसके बाद कंपनी फाइनल अकाउंट बनाएगा, कंपनी विल डिटरमाइन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट डिटरमाइन करके डायरेक्टर्स विल प्रपोज द डिविडेंड। आफ्टर दैट डायरेक्टर्स विल कंडक्ट AGM. In AGM all shareholders will attend AGM, correct, and in AGM shareholders will approve this dividend, and after approval of dividend will be paid to the shareholders. तो अभी मेरे को सोच समझ के आंसर देना, लाइक ये डेट को कंपनी ने डिविडेंड पे किया, कौन सा डेट है, मे बी 30 सितंबर। कौन से ईयर का डिविडेंड कंपनी ने 30 सितंबर को पे किया? द आंसर इज लास्ट ईयर। ये साल का डिविडेंड कंपनी ने 30 सितंबर को पे किया। सो व्हाट इज द नॉर्मल रूल फॉर डिविडेंड? करंट ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में पे होता है, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड उसके नेक्स्ट ईयर में पे होता है, लाइकवाइज लास्ट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में पे होता है। डू यू अग्री विद दिस? दिस इज द सिस्टम फॉर फाइनल डिविडेंड। व्हाट इज अदर डिविडेंड बेटा? इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मीन्स कंपनी विल पे करंट ईयर डिविडेंड इन करंट ईयर, दैट इज इंटरिम डिविडेंड, करेक्ट। current year dividend paid in current year, that is called as interim dividend. अभी आप बोलेंगे सर करना क्या है? Dividend received as per AS 13. There are two types of dividend: pre-acquisition dividend and post-acquisition dividend. कौन से डिविडेंड का बात चालू है बेटा? फाइनल डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर विच इज रिसीव्ड इन करंट ईयर, उसमें दो डिविडेंड रहेंगे, प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड मतलब क्या? मीनिंग समझो। एक्विजिशन मतलब परचेज, प्री मतलब पहले, हमने शेयर्स परचेस किए उसके पहले के पीरियड का डिविडेंड को बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड, करेक्ट। इट इज बिफोर एक्विजिशन डिविडेंड। मैंने करंट ईयर में शेयर्स परचेस किए, उस पे कंपनी मुझे लास्ट ईयर का डिविडेंड पे कर रहा है, बिकॉज जो दिन कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है वो दिन मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, तो आई विल गेट दैट डिविडेंड। डू यू अग्री विद दिस? सो लास्ट ईयर का डिविडेंड कंपनी ने मुझे पे किया, किस पे? जो शेयर मैंने करंट ईयर में खरीदे हैं, तो करंट ईयर में परचेस किए हैं उस पे मुझे लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है। ये मेरा डिविडेंड है कि प्रीवियस ओनर का डिविडेंड है? प्रीवियस ओनर का डिविडेंड है, बट कंपनी मुझे पे कर रहा है बिकॉज आई एम द होल्डर ऑन द डेट ऑफ डिविडेंड। डू यू अग्री विद दिस? इट इज प्रीवियस ओनर डिविडेंड। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू आवर P&L account. This dividend should be adjusted against the cost of investment. In other words, pre-acquisition dividend will be credited to investment account. ये समझा कि नहीं समझा?
व्हाट इज पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड? हमने शेयर परचेस किए उसके बाद के पीरियड का डिविडेंड। बेटा ये हमारा ही डिविडेंड है, हमें ही मिलना चाहिए और हमें ही मिल रहा है। देन इट इज अवर रेवेन्यू रिसिट, it will be transferred to our P&L account. In that scenario, entry will be bank account debit to dividend account, dividend to P&L if it is post acquisition dividend. आपने बचपन में, बचपन मतलब कॉमर्स का बचपन, 11th स्टैंडर्ड से फाइनल अकाउंट में डिविडेंड रिसीव्ड P&L क्रेडिट में डाला है ना, वो कौन सा डिविडेंड था? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। आज तक कभी प्री एक्विजिशन डिविडेंड आया ही नहीं है, बिकॉज आपने ये 13 पढ़ा ही नहीं है। करेक्ट? तुम लोग को प्री पोस्ट मीनिंग समझा क्या? इट इज previous owner dividend received by us. It should be adjusted against the cost of investment. Entry will be डिविडेंड मिलेगा हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये ध्यान से पढ़ो, प्री एक्विजिशन डिविडेंड P&L में नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट के सामने एडजस्ट होगा, क्योंकि जब भी हमने शेयर परचेज किए रहेंगे तभी जो भी प्राइस पे किया रहेगा दैट इज कम डिविडेंड प्राइस इंक्लूडिंग डिविडेंड प्राइस, बट ऑन दैट टाइम वी वर नॉट अवेयर ऑफ हाउ मच डिविडेंड वी हैव पेड अलोंग विथ कॉस्ट। इसलिए जब भी वो डिविडेंड रिसीव करते हैं तभी वो एडजस्ट होता है। It is our dividend received by us। मतलब क्या? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मतलब हमने शेयर खरीदा उसके बाद के पीरियड का डिविडेंड, दैट इज पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। इट इज अवर डिविडेंड रिसीव्ड बाय अस। इट इज it is a revenue receipt। It should be credited to P&L account। Bank account debit to dividend account and dividend account to P&L account। ये I hope you understood last year final dividend।
दूसरा एक लास्ट पार्ट, इंटरिम डिविडेंड का क्या करने का। इट इज current year dividend received in current year. It is current year dividend received in current year. It is always revenue receipt as per ICAI 8. It should be credited to P&L account. Entry बैंक टू डिविडेंड एंड डिविडेंड टू P&L। बोलो, डिविडेंड का पूरा थियरी समझा क्या आप लोग को? पक्का? अगर डिविडेंड का थियरी समझा तो हम ये क्वेश्चन में अभी अप्लाई करेंगे। थिंक अबाउट पॉइंट नंबर ई। आराम से सोचो, पहले आप मेरे को क्या फाइंड करके देंगे, पहले ध्यान से सुनो। रफ में, फेयर में मैं करवाएगा अपने को, और ये सम करने के लिए मिनिमम 20-25 मिनट लगेगा। मेरे को पहले डिविडेंड का अमाउंट फाइंड करके दो। क्या लिखा है? डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। मतलब कौन सा ईयर है? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में मिल रहा है। क्या रेट पे? 15%। वर डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एंड रिसीव्ड बाय मिस्टर सिंह ऑन 20th October 2011। चलो आराम से वर्किंग नोट नंबर 3, डिविडेंड। अभी मेरे साथ रहना, जोड़े रहो, सोच समझ के आंसर देना। अभी बहुत डेंजरस एरिया खेलने जा रहे हैं। कौन से ईयर का डिविडेंड है ये? फटाफट आंसर्स दो सब लोग, प्लीज गेट कनेक्टेड विथ मी। कौन से ईयर का डिविडेंड है ये? लास्ट ईयर का डिविडेंड। वेरी गुड, इट इज लास्ट ईयर डिविडेंड।
ओके, थिंक एंड टेल मी। ओपनिंग बैलेंस 20,000 शेयर्स है मेरे पास। ओपनिंग बैलेंस कोई बताएगा ये शेयर हमने कभी खरीदे रहेंगे? लास्ट ईयर में खरीदे रहेंगे। परफेक्ट, ये लास्ट ईयर में खरीदे रहेंगे। कभी डेट दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। वी विल अज्यूम कि जो ओपनिंग बैलेंस वाले शेयर्स हैं वो लास्ट ईयर में फर्स्ट डेट को परचेस किए रहेंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस? या ओके, अभी सोच समझ के बोलना। ये 20,000 शेयर्स मैंने लास्ट ईयर में फर्स्ट डेट को परचेस किए, तो इस पे डिविडेंड मिलेगा कि इस पे डिविडेंड नहीं मिलेगा? इस पे डिविडेंड मिलेगा। सो ओपनिंग बैलेंस पे डिविडेंड मिलेगा। सेकेंड, ये 5,000 शेयर्स मैंने करंट ईयर में परचेस किए हैं, इस पे मेरे को लास्ट ईयर का डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बाय द वे, ये 5,000 शेयर्स मैंने किसके पास से परचेस किए हैं? कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास से परचेस किए रहेंगे। करेक्ट? कंपनी के पास से थोड़ी शेयर परचेस करते हैं डेली बेसिस पे। अभी आज मॉर्निंग में मैंने रिलायंस के 100 शेयर परचेस किए, तो किसके पास से? क्या रिलायंस कंपनी के पास से परचेस किए? नहीं, कोई प्रीवियस ओनर रहेगा, जिसको बेचना रहेगा वो बेचेगा तो मैं परचेस करेगा। सो दीज शेयर्स आर अक्वायर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ओनर। तो ये मैंने 5,000 शेयर्स है ना बेटा, प्रीवियस ओनर के पास से करंट ईयर में खरीदे रहेंगे। ये समझा कि नहीं समझा? करेक्ट? अभी मेरे को बोलो, ये 5,000 शेयर्स पे लास्ट ईयर का डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एंड द आंसर इज मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज ये शेयर्स लास्ट ईयर में हमारे पास नहीं थे, बट किसी और के पास तो थे ना। Shares were not there with us, but it was there with somebody else. These shares were alive in last year, so these shares are eligible for dividend. इस पे डिविडेंड मिलेगा। अभी बोलो बोनस शेयर्स। ये बोनस शेयर्स कंपनी ने करंट ईयर में हमको इश्यू किए हैं, इस पे लास्ट ईयर का डिविडेंड आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये शेयर्स लास्ट ईयर में अलाइव ही नहीं थे, जिंदा ही नहीं थे, इनका बर्थ ही करंट ईयर में हुआ है, तो इस पे लास्ट ईयर का डिविडेंड कंपनी कैसे पे करेगा? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अभी बोलो, ये 5,000 शेयर्स राइट शेयर्स, इस पे लास्ट ईयर का डिविडेंड आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज ये शेयर्स लास्ट ईयर में थे ही नहीं, तो इस पे लास्ट ईयर का डिविडेंड नहीं आएगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? ये अगर इंटरिम डिविडेंड होता तो करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर में रिसीव किया, एसआर बोला रहता तो सब पे डिविडेंड आता। बिकॉज करंट ईयर में बोनस शेयर राइट शेयर सबका बर्थ हो चुका है, उसके बाद में कंपनी डिविडेंड पे कर रहा है। करेक्ट? यहां पे बोनस शेयर्स राइट शेयर्स लास्ट ईयर में थे ही नहीं, तो उस पे कंपनी लास्ट ईयर का डिविडेंड क्यों पे करेगा? ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? एक बार मेरे को आंसर दो, बिकॉज ये पूरे चैप्टर में डिविडेंड विल प्ले बिग रोल। यस धवल, समझा? डाउट है? समझा है? डन? ओके, वेरी गुड। चलो अभी फाइनली कितने शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा? सो 20,000 and 5,000 शेयर्स।
ओपनिंग बैलेंस कितने शेयर्स थे? 20,000 शेयर्स थे। और डिविडेंड कितना परसेंट है? 15% है। ये परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे। सो 20,000 इंटू 10 इंटू 15%। ये समझा? फेस वैल्यू पे डिविडेंड आता है बेटा, कॉस्ट पे डिविडेंड नहीं आएगा। करंट ईयर परचेज कितने शेयर्स थे? 5,000 इंटू 10 इंटू 15%, 7,500। चलो यहां तक क्लियर? ये देखो इधर, ये लास्ट ईयर है और कंपनी हमें करंट ईयर में डिविडेंड पे कर रहा है। कौन से ईयर का? लास्ट ईयर का। बरोबर है? सोच समझ के बोलना। ये 7,500, ये शेयर 5,000 शेयर हमने करंट ईयर में खरीदे हैं। इस पे मेरे को लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है। तो ये शेयर खरीदे उसके पहले का डिविडेंड है कि शेयर खरीदे उसके बाद के पीरियड का डिविडेंड है? तो ये 5,000 पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो प्री एक्विजिशन है कि वो पोस्ट एक्विजिशन है? ये 5,000 शेयर्स पे मेरे को लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है। सो परचेज किया उसके पहले का डिविडेंड है। सो दिस डिविडेंड इज कॉल्ड एज प्री एक्विजिशन डिविडेंड। इन प्री एक्विजिशन डिविडेंड का एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बाय द वे कंपेयर क्या करने का? नोट्स में आओ तो जरा, ये नोट्स में आओ, इधर लिखो कंपेयर date of acquisition with period of dividend. हुआ कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो समझा? ओके, अभी ये डिविडेंड पे आओ, सोच समझ के बोलना। ये ओपनिंग बैलेंस वाले शेयर्स जो 20,000 शेयर्स हैं हमने कभी खरीदे हैं? तो ये हमने लास्ट ईयर में ही खरीदे हैं। लास्ट ईयर में कौन से डेट को? डेट दिया है कि डेट मिसिंग है? डेट मिसिंग है, मतलब लास्ट ईयर में फर्स्ट डेट को ही बिगिनिंग में ही परचेस किए रहेंगे। तो ये 20,000 शेयर्स लास्ट ईयर के बिगिनिंग में परचेस किए हैं। और डिविडेंड कौन से पीरियड का मिल रहा है हमें? डिविडेंड शेयर परचेस करने के बाद के पीरियड का डिविडेंड मिल रहा है। सो 20,000 शेयर खरीदे उसके बाद का डिविडेंड मुझे मिल रहा है। तो ये कौन सा डिविडेंड होगा? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड।
इसका एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। सच बोलो, समझा क्या? वर्किंग क्लियर? अब इसका पोस्टिंग करते हैं। प्री इन्वेस्टमेंट में जाएगा, पोस्ट डिविडेंड कॉलम में जाएगा। डेट क्या है बोलो डिविडेंड का? 20 अक्टूबर। डिविडेंड रिसीव्ड क्रेडिट में आएगा। बाय बैंक अकाउंट, शेयर्स में डैश, डिविडेंड कॉलम 30,000 एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कॉलम 7,500। इन्वेस्टमेंट कॉलम मतलब कॉस्ट कॉलम। ये समझा कि नहीं समझा? अनहिता बेटा, अगर ये इंटरिम डिविडेंड होता तो ही बोनस और राइट्स पे आता, क्योंकि बोनस एंड राइट शेयर्स करंट ईयर में इश्यू किए और डिविडेंड पास्ट पीरियड का है, तो बोनस एंड राइट्स पे तो हमें डिविडेंड मिलेगा ही नहीं अगर फाइनल डिविडेंड है तो। इंटरिम डिविडेंड है देन इट इज करंट ईयर डिविडेंड रिसीव्ड इन करंट ईयर, तो उसको पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड मान लेने का एंड राइट्स एंड बोनस सब पे कैलकुलेट करने का। या इधर तक समझा सबको? चलो वी आर डन। डिविडेंड हो गया। लास्ट सेल्स कितना? 20,000 इक्विटी शेयर सेल कर रहे हैं, 3 रुपया प्रीमियम पे। ओके, डेट क्या है? 1 नवंबर। सेल तो सबको आता है ना यार, बहुत सिंपल है। क्रेडिट साइड पे आएगा $20,000 शेयर्स। क्या भाव पे? 13 रुपीज। सेल्स डन। सेल हो गया। अभी सेल का वर्किंग करना पड़ता है, जब भी सेल आएगा वर्किंग आएगा। फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल एज ऑन 1 नवंबर क्या कंपेयर करते हैं हम लोग? जब भी सेल होता है तभी सेपरेट वर्किंग करते हैं। सेलिंग प्राइस 2,60,000 माइनस कॉस्ट। अभी कॉस्ट कैसे फाइंड करने का बेटा? वेटेड एवरेज मेथड। करेक्ट। अभी वेटेड एवरेज कैसे करेंगे? शेयर्स उसका कॉस्ट चेक करो। 20,000 3,20,000। $5,000 $70,000। फिर 5,000 नील
फिर 5,000, 75,000, माइनस क्रेडिट माइनस करने का, वो डिविडेंड एडजस्ट किया ना कॉस्ट के सामने, इन शॉर्ट डेबिट माइनस क्रेडिट करना है, डेबिट माइनस क्रेडिट, ये सारे शेयर्स लिए, सारा कॉस्ट लिया, माइनस 7,500, ये 7,500 भूलना नहीं, कॉस्ट में एडजस्ट किया है, और जो सेल करते हैं उसके फिगर्स नहीं लेने हैं। कितना आ रहा है? कितना बेचा? कितना आ रहा है? चेक करो, 429, कॉस्ट ज़्यादा है, 1429, एंट्री बोलो लॉस का, 1429, डन, वी आर डन विथ ऑल ट्रांजैक्शंस। अभी वैल्यूएशन करना है लास्ट में, मतलब सब हो गया, अकाउंट क्लोज करो। $35,000 minus 20,000, $15,000, फिर डिविडेंड ट्रांसफर करो, $30,000, PNL में जाएगा, कॉस्ट कॉलम क्लोज करो, $196,071 बना रहा है, वैल्यूएशन है, आजा वर्किंग में, लास्ट वर्किंग, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट,
15,000 shares, 14 rupees. To 10. 196,071. चेक करो. Everybody clear? That's it. ये हो गया अपना वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी का बेस्ट क्वेश्चन. कर पाएगा? फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी समझा सबको? वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी का क्वेश्चन क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग. Hey, are you interested in all this? हाँ, एक भी लेक्चर एब्सेंट नहीं रहना साथ में. और आज है ना, आपके पास जो भी मटेरियल है उसमें से इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट करने का, आरटीपी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट करने का, एमटीपी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट करने का. एवरी डे यू हैव टू डू दिस फॉर नेक्स्ट 10-11 डेज. करेंगे ना? सो कुछ भी नया दिखा तो मुझे मैसेज कर देना. अग्रीड? ओके, हाँ देता हूं. डन? नोटेड? चलो आ जाओ. अभी एक 2 minutes ब्रीदर ले लो, 2-3 minutes. Then we will start with new concept. Correct? So take 2 to 3 minutes breather, then I will proceed further. Yes? Everybody in? Okay, listen. This question number 6 is related with valuation. Good question. How to value investments? We have already covered this theory. How to value investments? If it is current investment, it should be valued at cost or fair value, whichever is lower. If it is long-term investment, then it will be valued at cost unless the reduction is other than temporary. That concept we will cover in this. Pay attention. Answer the following question. A Limited invested in shares of XYZ Limited on 1st December 2019 at a cost of 50,000. Out of these shares, 25,000 shares were purchased with an intention to hold for 6 months and 25,000 rupees shares were purchased with an intention to hold for long-term investment. Correct? A Limited also earlier purchased gold for 1 lakh, silver for 30 lakhs on 1st April 2019. Correct? So A Limited के पास 3 इन्वेस्टमेंट है, एक गोल्ड, एक सिल्वर
एंड इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में दो हैं, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मार्केट वैल्यू एज ऑन 31st March 2020 ऑफ अबाउ इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन। तो ये तीनों इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू दिया है, शेयर्स का 47,500, गोल्ड 1,80,000, सिल्वर 30,55,000। एंड ये शेयर परचेस कितने में किए थे? 25 टोटल 50,000 में परचेस किए थे, उसका भाव हो गया 47,500, मतलब भाव कम हो चुका है। दिस रिडक्शन इज टेम्पररी इन नेचर, करेक्ट। आगे, हाउ अबाउट इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मेसर्स ए लिमिटेड for the year ended 31st March 2020 as per AS 13 revised. Let us start with the solution. A limited. This is accounting standard related question. How to write answers? As per AS 13, accounting for investments, cost or fair value, whichever is lower. Long-term investment is valued at long-term investment is valued at cost unless the reduction is other than temporary. Statement showing valuation of
फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किधर किया है बेटा? इक्विटी शेयर्स में. दिस इज अवर फर्स्ट वन. अभी इक्विटी शेयर में दो हैं. करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. अभी मेरे को बोलो, करंट इन्वेस्टमेंट विल बी वैल्यूड एट व्हाट? कॉस्ट और फेयर वैल्यू? whichever is lower. कितना है करंट इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट? 25,000. फेयर वैल्यू 47,500 शेयर्स का टोटल वैल्यू है. 47,500, इसमें हाफ करंट इन्वेस्टमेंट है. करेक्ट. दोनों में से लोअर 23,750. long term investment. Now long term investment का cost है 25,000, फेयर वैल्यू 23,750. किस पे वैल्यू करेंगे? It should be valued at cost. Since reduction is temporary, and cost was 25,000. ये समझा कि नहीं समझा? Second, investment in gold. It is long-term investment. It will be valued at cost. What was the cost of gold? 1 lakh. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे. 1 लाख का गोल्ड है, 1,80,000 मार्केट वैल्यू. वी विल वैल्यू इट एट कॉस्ट. नंबर 3, silver. $30 lakhs, 50,000. 30 lakhs and market price 30,55,000. कॉस्ट पे ही वैल्यू करेंगे. This is the total value of investment. बोलो, ये समझा कि नहीं समझा? एवरीबॉडी क्लियर?
concept is based on valuation of investment. Concept is based on valuation of investment. Pakka clear? This was our question number 6. Abhi suno. Last half an hour, last concept I am discussing, very important one, pay attention. See, every day we will complete our target, correct? Reclassification, it means conversion of current investment into long-term investment, and conversion of long-term investment into long-term investment into current investment. What do you mean by classification of investment? Classification matlab types of investments on the basis of tenure. Two types as per AS 13, current investment and long-term investment. Abhi, at the time of acquisition, we have classified our investment as a current investment. Then after few months, we have decided कि अभी ये इन्वेस्टमेंट को हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है हमारे साथ. Then what would be the value of that long term investment? That is the discussion. हमने एक इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करके रखा है, 5 साल तक रखेंगे. बट लेटर ऑन वी केम टू नो कि अभी ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर रहा है. नाउ आवर इंटेंशन इज चेंज्ड. We want to dispose of this investment within 12 months. Means it is conversion of long term investment into current investment. अब बोलेगा करना क्या है? What would be the value of transfer? What would be the value of transfer? याद रखना, value of conversion वो हमें फाइंड करना है. उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. ध्यान से मेरे साथ रहना. Case 1. Current investment cost 100, fair value, that is market value, is 90.
we have decided to convert this current investment into long-term investment. We have to convert current investment into long-term investment. Now, what will be the amount of transfer, or what will be the value of transfer or conversion? मतलब अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे बुक में दिखेगा, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम बुक में क्या वैल्यू पे बताएंगे? दैट इज द क्वेश्चन. क्लियर? एंड द आंसर इज कॉस्ट और fair value, whichever is lower. Cost or fair value, whichever is lower, and that is 90 rupees in our example. So current investment को long term में convert करेंगे, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे बुक में क्या वैल्यू पे दिखेगा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर. इधर डाउट आएगा, सर कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर तो करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन है. यस, रिक्लासिफिकेशन में क्या करना है? पहले वैल्यू करना है. फर्स्ट यू हैव टू डू वैल्यूएशन एंड देन कन्वर्जन. उल्टा किया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. पहले क्या करना है? वैल्यूएशन एंड देन कन्वर्शन. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? पहले करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो रहा है, सो करंट इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करो. तो करंट इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, मतलब 90. दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. बोलो ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? पहले क्या करने का? पहले वैल्यूएशन करने का, बाद में कन्वर्ट करने का. ये ड्रॉ किया सबने? Case 2. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने परचेस किया था 100 रुपीज में, करेक्ट? Then there was a reduction and that reduction was other than temporary. So we have considered that reduction of 5 rupees. Now our investment showing in our books at 95.
long term investment converted into current investments, what would be the value or amount of transfer? Cost or carrying value, whichever is lower. Carrying value मतलब book value. whichever is lower, that is 95. इन शॉर्ट पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करो, फिर उसको करंट में ट्रांसफर करो. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बुक में क्या वैल्यू पे रहेगा? 95 पे रहेगा. कैरिंग वैल्यू पे रहेगा whichever is lower. बोलो यहां तक समझा क्या एवरीबॉडी? पक्का निनाद? ओके डन, सुपर. आगे बढ़ू. चलो अभी इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हमें करना है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स में हो जाएगा. भारत लिमिटेड wants to reclassify its investment as per AS 13. Decide on the amount of transfer based on the following information. Correct? First, a portion of current investment purchased for 20 lakhs. What is 20 lakhs? Cost. हमने करंट इन्वेस्टमेंट 20 लाख में खरीदा है. टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. एक करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में गया तो पहले करंट को वैल्यू करने का. करंट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू whichever is lower. As the company has decided to retain them, market value is given 25 lakh. दोनों में लोअर जो रहेगा उस पे वैल्यू करेंगे and that is 20 lakh. Did you understand this? चलो आंसर is 20 lakh. Another portion of current investment purchased for 15 lakhs, मतलब cost है 15 lakhs, to be reclassified as long term investments. Market value of these investments as on the date of balance sheet was 6,50,000. वापस करंट इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट हो रहा है लॉन्ग टर्म में. पहले करंट को वैल्यू करने का. करंट को वैल्यू करेंगे कॉस्ट और फेयर वैल्यू whichever is lower. कॉस्ट है 15 लाख, फेयर वैल्यू 6.5 lakh. So value of transfer will be 6.5 lakh and difference 8.5 lakh will be transferred to P&L as a loss on conversion. Because अभी मैं करंट इन्वेस्टमेंट मेरे बुक में 15 लाख पे तो रहेगा, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो 6.5 पे कन्वर्ट करेंगे तो बाकी का इन्वेस्टमेंट बुक से निकालना पड़ेगा. सो इट विल बी ट्रांसफर टू P&L. डू यू अग्री विद दिस? मैं इसका आंसर लिखवाएगा आपको, बट इतना समझा. थर्ड, करंट सर्टन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, नो लॉन्गर कंसिडर्ड फॉर होल्डिंग पर्पस एंड इट इज टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट. ओरिजिनल कॉस्ट कितना? 18 लाख, बट रिटर्न हैड बीन रिटर्न डाउन टू 12 लाख. मतलब ओरिजिनल कॉस्ट 18 लाख था, उसको ऑलरेडी हमने राइट डाउन मतलब कम करके अभी 12 लाख पे हमारे बुक में बताया है. करेक्ट? बिकॉज ये जो रिडक्शन था इट वॉज अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन. करेक्ट? अभी बोलो किस पे वैल्यू करेंगे हम लोग? कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू whichever is lower and that is 12 lakh. Did you understand this? आंसर लिखो. ये कैसे लिखना है? एग्जाम में आता है 4 to 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 लिखो. एज पर
As per AS 13 accounting for investments, if current investment is reclassified as long-term investment, then the amount of transfer shall be cost or fair value whichever is lower. And if long-term investment is reclassified as current investment, amount of transfer shall be cost or carrying value whichever is lower. कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आंसर्स लिखेंगे ना बेटा, पहले करेक्ट नेम एंड नंबर लिखने का, फिर रेलेवेंट प्रोविजन लिखने का. अभी एक एक कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट केस, in this case current investment is reclassified as long-term investment. Cost 20 lakhs. $25 lakhs. Likewise, in this case,
current investment is reclassified as cost ₹15 lakhs Clear everybody? Last. Long-term investment is reclassified as cost was 18 lakhs. Done everybody? सच बोलो, ये समझा क्या? That's it. This is the end of investment accounting from our side. अभी आप लोग क्या करना है वो सुन लो. आपके पास जो भी मटेरियल रहेगा उसमें से आज पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट कर देना. At least 1 or 2 questions of fixed income bearing securities you have to write down. 1 or 2 questions of variable income bearing securities you have to write down. मिनिमम 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करना. और फिर AS 13 के रिलेटेड 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6, वैल्यूएशन एंड रिक्लासिफिकेशन, जो दोनों मैंने कवर किया है. करेक्ट. RTP MTP में जो भी इन्वेस्टमेंट के सम्स रहेंगे वो एक बार देख लो. अभी सी ये स्टेज पे कैसा रहेगा बेटा, आपको फटाफट चेक करने का. हाँ, परचेज सेल मैनेजेबल है, ये सब हम कर पाएंगे. अपने आप से बात करना है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है. करेक्ट. ऐसे हर चैप्टर
मैं आपको हर लेक्चर के बाद बोलूंगा, वो प्लीज मेरे साथ कंप्लीट करना. यू विल फील द डिफरेंस एट द एंड. टेक माय वर्ड्स. करेक्ट? या. थैंक यू सो मच. See you tomorrow morning. Bye. Take care. We will start with new chapter in tomorrow's lecture. Thank you. Bye. Take care.